वेलकम एवरीवन टू के सीरीज 2। आज थोड़ा सा खेलूंगा मेन स्टफ हो सके तो। और भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा ना तो मैं फिर रोक दूंगा, फिर बचा हुआ एरिया एक्सप्लोर मारूंगा। गेम का गेम हम लोग का क्लोज ही है यार मेन एंडिंग पे। अब 86D/47 मतलब समझा नहीं मैं। व्हाट डू यू वांट टू से मैन? एंड बाय द वे स्टॉमी सेक, KCD2 मेरा भाई बहुत क्लोज है एंडिंग के भाई, एक तरह से मान के चलो। मतलब मैं ये ये वाला मेन मिशन जब कर लूंगा ना, उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा मेरा। वहां से गेम मेरा फिर एंडिंग की तरफ जाएगा। और मैं एंडिंग के बाद ये DLC करने वाला हूँ, क्योंकि ये DLC लोगों ने कहा है कि इसे मेन स्टोरी के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा करने में, डायलॉग वाइज। और ये थोड़ा वो भी है कि थोड़ा बड़ा DLC, आई थिंक वही 6-7 घंटे का DLC है इन्वेस्टिगेशन वाला, तो इसे मैं आराम से बाद में करूँगा। तो मान के चलो KCD अब मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा इन फ्यू डेज। बट भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले ये सब छोटे मोटे जो ये है ना, ये रूइंस में एक्सप्लोर मार लूंगा एक बार, देखने के लिए क्या क्या है इनमें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। भाई मुझे तो लगा दिसंबर तक खेलोगे। नहीं यार भाई मैंने स्टार्ट इसीलिए जल्दी कर दिया था ताकि भाई अब देखो मेरे पास ये गेम मानो अगस्त में खत्म, ठीक है? मेरा ये गेम हो गया अगस्त में खत्म। अब ये गेम क्योंकि अगस्त में खत्म है तो मेरे पास विचर 3, GTA वाइस सिटी ये सब बचे हैं खेलने के लिए। विचर 3 का बचा हुआ कंटेंट करूंगा आराम से। भाई मैंने वापस रिक्वेस्ट डाली है वैसे रिकॉर्ड के लिए, इस बार एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। कि किस चीज़ के रिकॉर्ड के लिए? अच्छा वो तुमने हिटमैन में जो रिकॉर्ड बनाया था वो, समझ गया समझ गया। देखो शायद हो जाए। दो इसके बाद मेरा है प्लान GTA वाइस सिटी वगैरह खेलूंगा। एंड विचर 3 मेरा देखो, तुम मेरे आए नहीं थे जब मैंने खेला था लास्ट ईयर। मैंने मेन स्टोरी और उसकी साइड को सारी कंप्लीट कर दिया, बट उस गेम में जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और क्वेश्चन मार्क्स हो गए, पॉइंट मतलब जो जो और एक्स्ट्रा चीज़, एटलीस्ट मान लो 100 आवर्स के आसपास, वो सब है मेरे पास खेलने को। बट विचर ज़्यादा लंबा गेम नहीं है यार, विचर में कंटेंट ज़्यादा है, बट वो फास्ट पेस्ड फैंटेसी गेम है, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कंपेरेटिवली, तो वो भी मैं कर लूंगा। वुल्वरीन भी, बाकी तुम कह रहे हो ना वुल्वरीन का सीन है ना, अगर मेरे फ्रेंड ने खरीद लिया तो मैं खेलूंगा। अगर मेरे दोस्त ने ले लिया तो मैं वुल्वरीन खेलूंगा, और फैंटम ब्लेड भी मैं खेलूंगा। भाई वो एक्चुअली H7D क्लीन रखने के लिए मैंने एक चीज़ ऑफ कर रखी थी। चक्कर ने बोला उसको ऑन करके वापस सबमिट करो। वो एक्चुअली मैंने हर्ड और क्लीन रखने के लिए मैंने एक चीज़ ऑफ करी थी, कि चक्कर ने बोला उसको ऑन करके। अच्छा तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब तुम्हें रीज़न पता चला कि why checker asked you to do that? भाई वो डिफिकल्टी के लिए, लाइक व्हाट वाज द डिफिकल्टी ऑफ द गेम? अच्छा
भाई रन को एक्सप्लेन करते हैं, सालों ने पैराग्राफ मांग लिया। मैं कोई बात नहीं। भाई ये वाला साइड कंटेंट, ये वाला मेन क्वेस्ट कर लेता हूँ एक मैं, फिर मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न स्टार्ट होते ही रोक दूंगा और फिर एक्सप्लोर एंड ऑल दैट स्टफ। वैसे जो चेकर है उसने हिटमैन ट्रायलॉजी 18 में कर रखी है, इसलिए जो बोल रहा सही होगा। हाँ वो गलत तो नहीं बोल रहा होगा, वो कुछ तो होगा सीन। वैसे उन लोग को भाई ध्यान से दो फूका भी रहता होगा ना कि बंदा पूरा सही से कर ले। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा KCD 2 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इतनी लंबी जर्नी रही है ना मेरे चैनल की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट। 18 मिनट्स फॉर होल ट्रायो इज क्रेजी वर्क। अरे बहुत ज्यादा क्रेजी। Stop a while, my good man. God be with you. God be with you, noble sir. I'm Henry of Skalitz, and I serve the Lord of Lipa. Sekunish of Belevitz. Poor as a church mouse, but a free man once again. A free man again? What happened to you, Kunesh? Ah, the greatest of misfortunes befell me. Figuring out this war is a job and a half. Aye. This feuding between the royal brothers is damn muddled, all right. Precisely. I gambled on Jobst over Sigismund a few years back. Only his Hungarian cavalry soon routed us, and I spent 2 years in captivity. You were held captive? What was it like? Hardly wondrous, I'll tell you that. But what irritated me most was being powerless to do anything. It's all those blasted Hungarians' fault. They can shove my silver up their arse and then lick it and kiss it for all I care. I totally agree. Sigismund is holding his brother Wenceslas, the rightful king, under lock and key in Vienna. What a bloody awful affair this war is. In my day, men would fight with honor and integrity, not stab each other. भाई मैंने बैंकॉक 3 मिनट रन भी मार ली, वैसे उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम कुछ ज़्यादा ही कम है। लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड 34 सेकंड भाई। My इसने sentiments किया है। exactly, Sir Kunesh. Why, young man, I see you stand with Wenceslas, eh? I tell you though, he's the one who dragged our land into this mess. How so? It was the Hungarians who captured you, wasn't it? Because I was a fool. But I've realized that the only competent king here is Sigismund. I disagree with you, sir. Sigismund is a scoundrel who will do our land no good. That's what often happens in war. Still, for the good of the country, I'll side with Sigismund in the end, especially considering what a drunkard and fornicator... पता नहीं ज़ेबुलस करके कुछ है, शायद यूट्यूबर है क्या वो भी? brother of his is. Wenceslas stands up for his people. Wenceslas can't even see the tip of his nose. And या things फिर are मैंने only getting worse. जिसने मेरी रन चेक करी थी, Sigismund's no king. या He's फिर nothing but a जिसने मेरी रन murderous चेक करी thief. थी। I challenge you to a duel, sir. What? You want to fight me? You're not a noble, but what do I care? Making you skip and jump will amuse me. Well... Wanker! See, that one's coming, eh? For the cross! Wanker! There you're in.
भाई ये पता है एकदम आखिरी सेकंड में अपना चेंज कर दे रहा है। You win, young man. But things will only get worse. Mark my words. वेट अभी पड़ता जैक। Wenceslas will do nothing but throw the land back into turmoil. Here's a few groschen to show you I'm a man of honor. Thank you. I'll remember you as a chivalrous knight, Sir Kunesh. हाँ, लाइक सब रन वाटी पर डालते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। भाई जो रन मैंने वापस डाली है, साइम राइम 10 ms ज़्यादा है बट इंडिया के लिए बहुत है। बाय द वे 200+ आवर्स इन केसीडी वाला बोल रहा तलवार कर दे रहा है। मैं ये बोल रहा था कि वो तलवार एकदम लास्ट सेकंड पे चेंज कर दे रहा है डायरेक्शन अपनी। मतलब नॉर्मल बैंडिट्स नहीं करते ये चीज़ जल्दी भाई। वो कर क्या रहा था कि कुनेश वो मतलब वो राइट तरफ है तो मैं अपनी तलवार लेफ्ट कर रहा हूँ, फिर एकदम से वो राइट करके मेरे पे अटैक कर रहा है। मेरे को वो मौका नहीं मिल रहा मास्टर स्ट्राइक करने का। ऑडेंटिस फॉर्चूना यू आर बाय वेलकम मिस्टर पैरासाइट। आप कल रात कुछ लिखने वाले थे बट मैंने स्ट्रीम बंद कर दी थी। आप बोलो क्या लिखना था आपको? आप कल रात कुछ लिखने वाले थे। भाई बुमराह न्यू एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताना। भाई तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरे को पिछले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी तब पता चला ना जब ये सोनम वांगचुक भैया वाला केस हुआ। मेरे पता है ग्रुप में एक बंदे ने पोस्ट डाली, चलो इसी बहाने एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तो पता चला। भूल गया, याद करो भाई, शायद गेम के रिलेटेड होगा। गेम के रिलेटेड होगा। लाइन क्या था वैसे? लाइन था शायद कुछ ऐसा लिखा था, आपने एक बात बताओ करके। What are you looking for? Oh, I found this parchment close by, and if you ask me, it's a map to, well, something. What, exactly? You can't leave me hanging like that. All right, well, I'm hoping it... न्यू वाले का नेम फिर भी नहीं बताया। नहीं, न्यू वाले का मुझे नहीं पता भाई, मैंने नहीं अभी सर्च मारा, मुझे रिसर्च नहीं किया। treasure map that will lead me to my fortune. कौन है भाई? आप ही बता दो। Well, how about you show it to me? I'm pretty familiar with these parts. I might be able to help you. Well, all this wandering has made my feet sore, but you'll give it back straight away. You got that? Or I'll lose my temper. Don't worry. Maybe I was asking about next game. ये एक बार मैं ना देख लेता हूँ, शायद आपको एग्जैक्ट याद है। नेक्स्ट गेम तो मैंने बता रखा है कि मेरा वाइस सिटी है, वही प्लान है, वाइस सिटी वगैरह इन विचर 3 वगैरह करने का। आपने लिखा था ऑल्सो करके, आपने ऑल्सो लिखा था, उसका मेरी स्ट्रीम बंद हो गई थी। आपने ऑल्सो लिखा था। अब शायद आपको याद है, यही आप पूछना था। प्रहलाद जोशी, ओके। सो क्या बैकग्राउंड है मतलब प्रहलाद जोशी का? थोड़ा कैन यू एक्सप्लेन? Give it to me. Here you go. I can't help you, I'm afraid. It doesn't ring any bells. Thanks anyhow. I'll keep looking. ब्रो ट्रेजर में इंटरेस्ट है कुछ नहीं, पढ़ाई के मामले में तो कुछ नहीं मतलब ऐसा पूछना नॉर्मली क्या है, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि उसके पास दूसरे मिनिस्ट्रीज हैं। ओके
इंडिया का कोल मिनिस्टर था, ओके ठीक है। इंडिया का कोल मिनिस्टर था और एक दो पोस्ट सर्व कर चुका है, समझ गया। चलो देखते हैं अब क्या होता है फिर। होपफुली थिंग्स गेट बेटर। 30 इयर्स आरएसएस मेंबर, ओके। यही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब इस मेरा बैकग्राउंड से ऐसे मतलब था। Herzlich willkommen. I'd like to look. What do you want? I hope you... I'll तुम क्या देखोगे? मैं क्या देखूंगा? मेरा कुछ नहीं, मैं मतलब कह रहा नॉर्मली देखते बाकियों का क्या होता है उस वे में। मेरा तो कुछ नहीं भाई, मेरा तो खत्म पाना चालू ही रहेगा। I'd like to... What are you? पोल I'd like to आर्म्स। learn... Also gut. Damit wir uns verstehen. I don't like those Schwertmeister. वैसे देखो से याद आया, Swagger around with the longsword. स्पाइडरमैन देखने जाओगे? Weapon is स्पाइडरमैन simply ब्रांड न्यू just डे। a tool like any other. Wenn du wirklich Interesse hast, I'll show you one of my favorite blows with a mace to the chin. Was sagst du dazu? That sounds good. Teach me that. Das ist richtig. This strike is about a few hard attacks, after which you quickly swing your axe and slice with it from below. It simply sends a man flying to heaven. And then अरे भाई sends पूरी him दुनिया straight to दुनिया hell. डाल दी तुमने मैप Und में, jetzt, try it out तुमने a यहाँ few चैट में। times, junger Mann. मैं देखूंगा बट नॉट इन द फर्स्ट वीक। और ओडेसी का कोई प्लान है आप लोगों का? अगर नहीं देखा है तो मेरे कुछ दोस्तों का प्लान है कि वो स्पाइडरमैन के बाद देखने जाएंगे। मेरा तो स्पाइडरमैन का ही मेन प्लान है, Das तो hast इसलिए du मैं gut ओडेसी नहीं gemacht, गया mein देखने। Freund. तो कोशिश करूंगा कि स्पॉयलर्स को, हाँ स्पॉयलर से तो बच के ही रहूंगा भाई। कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, मैं तो ट्रेलर्स तक नहीं देख रहा। जरूरी है भाई सेफ रहना। The Lord be with you. What brings you here? I beg your pardon, my lady. I'm asking, but... If it's mercenary, you'll have to be with you. Oh, I can't Christ, eat anymore. pardon me. Maybe later. ओडेसी बाद में कभी देखूंगा ओटीटी में भी भाई, तब देखूंगा जब सोनी सब पर आ गई शाम 4 बजे। अबे The canard. That pièce de pacotille. How'd you feel? What did you say? How do you feel? C'est terrible, mon ami. When the cannon flew apart, I thought we were done for. I am alive. भाई वैसे But I बताओ, feel like all my bones have been ground to dust. Kubyanka doesn't look too worse for wear. Because I took the force of the blast for the both of us. I pushed him aside at the last moment. Aha. How did you know that the cannon was about to burst? Intuition, mon ami. फिलहाल तो बेटर कॉल सोल। हाँ कहाँ तक कैसा चल रहा है? I can't hear. एनपीजे। My mouth. हाँ भाई तुम्हारा भी हगने वाला, खत्म होने वाला। Thinking about it. What did they taste like? Honey. What do you think about Malasov? We were damn lucky. More like the people in the village were damned lucky. And प्रेशर ऑन द शीटिंग ऑफ माइक को रिटायर होना पड़ा। ओके, थोड़ा बता सकते हो क्या 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 चल रहा है? और glad you talked the devil out of burning it down. Well, it took a bit more than talk. It takes guts to stand up to Hinnick. But to beat him? My lord. Do you think he'll want revenge? You humiliated him in front of his own men. It can't be ruled out. You'd better keep an eye on him. Or go and have it out with him, straight up. Any idea what'll happen next? Another madcap scheme, most likely. बिना आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही हक दो सारा। That's all we ever seem to do, in case you hadn't noticed.
You got to do something crazy occasionally if you want to achieve big things, don't you? That's right. Occasionally. और मेरे भाई कैसा है? What do you think of Rosa Ruthard? Never met a girl like her before. What do... But I didn't like the fact कि Soul manipulated old people so he could get his share of Sandpiper's money. Sorry, माइक बोला, चक I mean. अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं सोचा माइक रिटायर होना पड़ा, थोड़ा मेरे दिमाग में आया नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा। चक हाँ, सोल का तो यार ये तो है भाई, वो साला स्कैमर है बहुत बड़ा, वो हरामी आदमी है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, आई रिस्पेक्ट वॉल्टर मोर देन सोल। वॉल्टर भले ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल हो, लेकिन सोल भी साला स्कैमर है। मेरे को ये स्कैमर लोगों से ज्यादा गुस्सा आता है भाई। थंबनेल कैसी थी बाय द वे? ये थंबनेल ठीक थी आई थिंक, ओके ओके। I know. She's a Shikse. मैं खुद कौन सी अच्छी बनाता? She's quite comely, but a bit too smart for her own good. ये सैमुअल मेरा भाई है भाई। शॉय से तुम्हें पता है ना, केसीडी 1 में हमारा जो स्टेप फादर था मार्टिन, तो उसका बेटा है ये। Or else he will end up like Adam did with Lilith. Think of the poor fellow who will have her for a wife one day. अरे ये चैट का है वो। हाँ, well because till now soul never did bad to the true innocents. well because till now soul never did bad। भाई सोल का क्या है ना, वो वैसे मर्डर वाला बंदा नहीं है कि किलिंग पर आ जाए एकदम वैसे, बट भाई ये स्कैमर है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है उसको देख के। वॉल्टर का क्या है ना, वॉल्टर वैसे है तो ज्यादा डेंजरस, पर फिर भी पता है उस पर गुस्सा नहीं आता भाई, मुझे कभी उस पर गुस्सा नहीं आया। वो साला मैनिपुलेटर अच्छा है भाई वॉल्टर, वो मास्टर मैनिपुलेटर है, वो खुद को एम्पैथेटिक शो कर देता है हर बार, है तो बड़ा ही मादरचोद आदमी वो भी। आई एम ऑन द फ्री फोन टाइपिंग टू कॉल ऑल ऑफ माई चेंज ओ आई स्पेंड। अच्छा ये गाना है क्या ये कोई? Careful. I've got some meat. Hey? Well, Good to see you, friend. भाई लास्ट केसीडी गेम फॉर यू। हाँ लास्ट ही है, नेक्स्ट गेम अनलेस जब तक ना आ जाए। Greetings. आर यू रिमेम्बरिंग समथिंग? ये तो प्लेस थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही। हाँ नहीं तो ये प्लेस, इससे वो टैम्बर्ग वाली वाइब आती है यहाँ से, ऐसे कह रहे तो। एक्सेप्ट विचर बिकॉज बोथ आर सेम एक्सेप्ट विचर हैज मैजिक, एक है बंगाली रेफरेंस। भाई विचर ना, विचर की मेन चीज पता है क्या है? स्टॉमी से वो गेम कंटेंट ज़्यादा देता है केसीडी से, मतलब केसीडी के कंपैरिजन में उसमें मिशन क्वेस्ट सब कुछ ज़्यादा है, बट डिफरेंस है कि विचर में सिर्फ कटसीन ही उसका टाइम लेते हैं, ओनली कटसीन्स की वजह से वो गेम लंबा चलता है। उसका गेम प्ले जो है ना वो उसको लंबा नहीं खींचता, बहुत ईजी गेम है वो कंपेरेटिवली। अगर मैं डिफिकल्टी और गिरा दूँ तो और जल्दी हो जाए, क्योंकि गैरल्ट के पास भाई मैजिक एलिमेंट्स है भाई, मुझे बस सही से यूज़ करने हैं, बटन दबाना है, हो गया पार। अनलेस मैं हार्डेस्ट पे डेथ मार्च पे खेल रहा हूँ। वो विचर का वर्ल्ड फैंटेसी वर्ल्ड है ना, वो एक्शन गेम है। केसीडी में मेरे को टाइम लेना पड़ता है भाई चीज़ों का, मतलब तुम अब विचर GTA 6 तक खेलोगे? नहीं नहीं, उससे पहले
भाई विचर ज्यादा बड़ी गेम नहीं है, मेरा वैसे भी कंप्लीट हो चुका है विचर 3 भाई, डीएलसीज के साथ, और साइड क्वेस्ट भी सारी हो चुकी हैं। जो मेन लंबा चलने वाला इवेंट था ना कि उसका हो चुका है, बस बचा हुआ साइड कंटेंट करूंगा पूरा मजे मारने के लिए। मतलब भाई उस गेम के ऑलरेडी मैंने 28 स्ट्रीम्स कर लिए हैं ना। आई थिंक KCD2 हैज मोर कंटेंट इफ यू कंपेयर ऑल DLCs, आई मीन इफ यू इंक्लूड ऑल DLCs। यार मैं पता ओपन वर्ल्ड और क्वेस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ भाई। ओपन वर्ल्ड तुम अगर केसीडी के सिर्फ क्वेस्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेस्ट देखोगे ना तो कंटेंट कम ही है भाई उसमें। आई मीन मेन स्टोरी में कुछ 32 मिशंस हैं, साइड मिशन साइड क्वेस्ट डेफिनेटली बहुत सारी है। आई एग्री बट विचर को मेरे को लगता है ना, विचर का मेन सीन ये है ना उसमें नंबर ऑफ क्वेस्ट ज्यादा है, बट क्योंकि वो गेम फैंटेसी है ना तो वो आप फास्ट पेस उसे कंप्लीट कर पाते हो, आपकी पेसिंग ज्यादा हो रहती है। आप 10 लोगों को मार सकते हो विचर में, केसीडी में नहीं मार सकते। लॉन्गेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम इज सबवे सर्फर सर गरीना फ्री फायर मैक्स इंडिया। सबवे सर्फर सेव मार देता यार जस्ट इन केस। केसीडी 2 में डेफिनेटली कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट मेरे को लगता है केसीडी लंबा इसलिए लगता है ना क्योंकि वो स्लो, उसका नेचर स्लो बर्न है। आपको सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, आपको टाइमली चीज़ों को करना पड़ता है, टाइम्ड क्वेस्ट होती हैं तो उसे टाइम से करना पड़ता है। विचर में वो नहीं है भाई, विचर आप फास्ट पेस चला पाते हो। साइलेंट हिल 2 रीमेक बाय कर ली 1200 की। ओके खेल के बताना कैसी है। गांधी गुश पार्टी क्या क्या बोल रहे हो भाई। बाबा से चैलेंजर आप क्या कह रहे थे कि ये जगह देख के कुछ याद आया कि नहीं करके? मेरे को तो थोड़ा बहुत तामबर्ग ही याद आया, बट है तो दोनों अलग ही जगह। बहन चोट क्या है लग रही है। जैन जिस्का, ये जैन जिस्का भी रियल बंदा है इफ यू डोंट नो, इज अ हिस्टोरिकल फिगर। ये देखो भाई वन बर्ग ऑफ, आई कांट सी यू डायरेक्टली। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा थोड़ा हिंट दे सकते हो कि क्या केसीडी 1 के रिलेटेड है कि नहीं करके ऐसे? Henry, how are you doing? You know how it goes. It could always be worse. I've got this feeling the worst is still ahead of us. Same here. Trouble's coming from all sides. We'll see how it turns out. Anyway, sir, I don't mean to be rude, but I doubt you just want to ask how I'm doing. मैं नहीं तू कुछ मत बोल, चुप रह। You're तू right. spoiler दे। अरे याद आ गया, मैं बोल रहा था कि यू कुड रोमांस बोथ कैथरीन एंड रोजा। अरे वाह भाई, फिर तो दोनों को पेलूंगा। Let me get to the point. I need help with something, but I have no one to ask, even though I know you have a lot on your plate. एक सेकेंड। अबे यार स्टार्ट डीएलसी स्टार्ट ना हो जाए। एनीवेज हिंट इज गॉडविन से रिलेट। ओके अब मैं समझ गया। बस हटाना मत स्क्रीन से, बस नहीं हटाऊंगा बस वो उतना ही गंदा नहीं होगा। मैं जा रहा लिटरली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आता। मेरे हिसाब से तभी वो 18+ नहीं होगा भाई उसमें रोमांस, अगर हुआ तो मैं हटा दूंगा पर पक्का।
गॉडविन से रिलेटेड मैं समझ गया, वही प्रोलॉग में आता है ना बैटल। I'd be happy to offer my services. What's it about? वही जो मैंने An बताया old वही। friend of mine reached out to me, Albik of Unichov. Does the name ring a bell? यस। That name does ring a bell. Isn't that the famous sawbones? Physician would be the more accurate term. But even that barely does him justice. He's one of the greatest I think scholars of ready our बोलने age, का option and आना चाहिए, also तब King मैं बोल Wenceslas' दूंगा। personal physician. It's whispered at court that the king has fallen seriously ill while imprisoned in Vienna. Sigismund focuses on plundering his kingdom, and Wenceslas's health hardly seems to concern him, does it? Maybe. Aren't these just rumors? This is about our king's health. Even if they are just rumors, to me, it's cause for concern. I can't just wave तो it यहाँ off. पर क्लिफ हैंगर था गेम का, समझ गया When मैं। Master Albek heard about Main it, game की he starting में। decided to act. He wants That's to go when से all the way गॉडविन to बन के Vienna to खेलने see the मिले। king. No. For now, he's heading to Sedlec. Abbot Jan holds considerable influence at Sigismund's court. Albek wants to visit him and ask for his intercession. Nah, I don't like it. If the abbot is allied with Sigismund, he might want to detain Albik, or blackmail him. I feel the same, but Albek won't be talked out of it. He sees helping the king as his highest duty. Can you tell me more about the abbot? Sorry, but it sounds like you're afraid of him. I met him once, too, but I didn't get a bad impression. You know Abbot Jan? Not quite. We had dealings once. Something with bones. But never mind that. Go on. Look, Henry, every high-ranking cleric's a politician in his own way. What worries me about Abbot Jan is what he ascribes his authority to. Others claim their vocation is divine will. He sees it somewhat the other way round. I don't really get it. It's only natural for an abbot or a bishop to question the morality of his acts. One must act, even if it means confession and penance later. Abbot Jan, though, seems to think that his every move and scheme is divine will itself, and that could be dangerous. What's that got to do with you? Albik and I go way back. He's been living over the Alps for a few years, studying at the university in Padua. As soon as I heard about Wenceslas, I asked him to come back. It's a serious matter, and when it comes to the king's health, he's the best there is. But I didn't expect him to act so rashly. And how does all this concern me? As I said, it's a matter of security. God forgive me, our king's health is of course above all. But right now, I'm more worried about Albik. It took some effort, but I convinced him to wait, at least until I find him a reliable escort. And believe me, it wasn't easy. That mule's got a scholar's head, but it's a stubborn one. So, if I've got this straight... Okay, Google says Witcher 3 has around 350, 30 to 350 quests including expansion, KC2 are 200 quests if include DLC. Yes, मैं वही कह रहा हूँ कि KCD 2 में क्वेस्ट वगैरह कम है, बट उसका स्लो बर्न नेचर है ना, इसलिए गेम लंबा चलता है। विचर का क्या, आप जल्दी जल्दी क्वेस्ट निपटा देते हो, बस वही कट सीन ही है जो उसके लंबे चलते हैं। बॉस फाइट पे तो कहीं टाइम लगने वाला आपको, अनलेस भाई आप मेरी तरह थोड़ा बेकार खेल गए किसी बाय चांस। बाकी तो गेम बहुत ईजी है भाई विचर, वो कोई भी खेल सकता है आराम से। केसीडी में प्रिसाइज टाइमिंग रोल प्ले ज़्यादा है, बट क्लियर टाइम केसी 2 का ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि केसी 2 का वही है, स्लो बर्न है भाई। केसी 2 को ऐसा समझो आप कि वो एक ऐसी टीवी सीरीज़ है ना जो 50-60 मिनट के एपिसोड्स को लेकर चलती है। मतलब ऐसा केसी 2 को ऐसा समझो कि इसमें टोटल 80 एपिसोड्स हैं जो कि एक घंटे के हैं। और विचर को आप ऐसा समझो कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें 120 या 150 एपिसोड है, बट वो 30 या 40 मिनट के हैं। You want me to escort Wenceslas's court physician to the Sedlec monastery, where they don't usually let anyone in,
and the abbot is as thick as thieves with Sigismund. हाँ पता है So स्टार्टिंग काफी Albrecht, स्लो है वही. who was dead set on going himself, can try to get access to the imprisoned Wenceslas. No, actually, yes. That's exactly it. All right, I'll go with Alvik. Last time I was at the monastery, it was quite an experience. Experience? That's a long story. So what do you want me to do? Stop by and talk to Albrecht. Then decide for yourself. I meant to host him here, but he'd probably be bored out of his mind. He lodged in the meantime in Kuttenberg, at the Tarmac, with an apothecary. I think his name's Talbot. Give this letter to Albrecht, so he'll know I sent you personally. Tarmac, apothecary. All right, I'll go find him. Good luck. I'll be in your debt. यार एक क्वेस्ट तो स्टार्ट हो गई यार, लेकिन मैं करूंगा नहीं अभी यार. एक बार मैं सर्च मार लेता हूँ. ओके अभी मैं खेल सकता हूँ. अभी मैं मेन गेम चला सकता हूँ. भाई विचर 3 इन केसी 2 ऐसी गेम है जिसमें आप भले ही ऑप्शन है बट पीपल फेयर टू ट्रैवल बाय हॉर्स इंस्टेड ऑफ फास्ट ट्रैवल. इन 5 केसी विचर 3 पीपल फास्ट ट्रैवल विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. और भाई वही केसीडी में ये भी है ना कि आपको एनपीसीज मिलते हैं रास्ते में नॉर्मली, जिनसे आप बात कर सकते हो. You've lived through more battles than I have. What do you think about Malashov? I won't lie. There were moments when I was ready to meet my maker. But in the end, I was amazed how it turned out. So you didn't believe in it? I did. I just figured we'd have to get our hands dirty. But in the end, we managed to keep them pretty clean. Thanks in part to you. No, it was nothing, really. If you say so. But I'm glad to see you still got that boy from Skalitz. बट एक बात बोलो, कंटेंट वाइज नो स्काइरिम हैज मोर कंटेंट देन बोथ. आई थिंक हाँ स्काइरिम तो यार आरपीजी गेम्स का वो माना जाता है ना कि. Excuse me, sir. Could you please tell me where to find Master बट विद द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है With the इसमें? apothecary Talbot, on the tarmac. All right. Thank you. I'd like to look at that way. Fine.
कंटेंट इज मोर बट इट डजंट हैव क्वालिटी, मतलब रेपिटेटिव टाइप शिट ना, मतलब मजा नहीं आता होगा करने में। आई मीन यार स्काईरिम बहुत पुराना है यार, तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो विचर या केसीडी लेवल का, या आफ्टर अ व्हाइल यस। हाँ तो वही विचर या केसीडी लेवल का हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे कि वो फील दे। विचर और केसीडी ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। और भाई एक गेम और है जो कि आरपीजी नहीं है, बट उसने भी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया है भाई गेमिंग में। रेड डेड रिडेम्पशन 2, यस यस भाई। वो विदाउट बिंग आरपीजी गेम उसने भी एक बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया है भाई। मतलब वो गेम भाई उसकी डिटेलिंग अभी भी कोई गेम नहीं कर सकता भाई, उस लेवल की डिटेल्स भाई अभी भी। मतलब आरडीआर 2 की डिटेलिंग तो टॉप टियर है भाई, कोई मैच ही नहीं है। इवन अब मतलब जैसे जिस तरह की रियलिस्टिक डिटेल्स वो गेम दिखाता है ना, कोई गेम में नहीं है। मतलब एक एक डिटेल पे उन लोगों ने ध्यान दिया है, जिस पे देने की जरूरत नहीं भी है उन पे भी। इनफैक्ट वो गेम पेन्सटेकिंगली इमर्सिव है भाई, आरडीआर 2 जो है। केसीडी का तो दूसरा नाम ही है स्काईरिम विदाउट मैजिक। बट भाई केसीडी की क्वेस्ट तो क्वालिटी है यार, मतलब मैं ये को कभी नहीं कहूँगा कि केसीडी की क्वेस्ट में मज़ा नहीं आता। केसीडी की क्वेस्ट बहुत ज़्यादा फन है। आओ अब मिशन कर लेते। I'm not sure what to think of Malashov. I reckon it was a success. I can't bring myself to feel happy about it. What's done is done. The devil got his ass kicked, the peasants still have a roof over their heads. And if it weren't for you, half our men who are now rotting beneath the walls would still be breathing. After what I went through in Skalitz, I couldn't just burn down people's homes. Tell that to the dead. If only you'd let the devil do his job, there'd be a lot less of them. Look, I know you probably imagined yourself heroically saving the king and protecting innocents. And believe me, that's exactly what we're doing. It's just... Yes, वही तो प्रॉब्लम है, स्काईरिम डोंट हैव दैट क्वालिटी राइटिंग। वही स्काईरिम में वो क्वालिटी नहीं होगी। हाँ रिट्टी, क्वालिटी तो इस घटिया गेम में भी नहीं है। हाँ भाई क्रिम्सन डेजर्ट ऐसे झाड़ गेम में है ना, जिसकी स्टोरी भी रीस हो जाती, तो लॉडी झाट की सी गेम। वो क्रिम्सन डेजर्ट जैसी गेम पे तो हम मुतू भी ना भाई। लाइक इवन कैरेक्टर क्रिएटर यू हैव 10 प्लेबर रेसेस टू चूज इन स्काईरिम। वो रोल प्ले ऑप्शन बहुत है स्काईरिम में, मैंने देखा है कि हाँ रोल प्ले ऑप्शन बहुत है भाई। क्या स्काईरिम कैसा भी हो, वो क्रिम्सन डेजर्ट से तो लाख गुना बेहतर ही होगा। I would pick that first Skyrim game over that the Crimson trash. not as simple and honorable as we'd like it to be. So, I'm back. How's it going? Have you got anything out of von Bergov? You came at the right time.
We're just about to deal with him. And you can join in. Okay. Welcome to Sukdal, Lord von Berghoff. Despite the circumstances that brought you here. It is an honor, Peter. Compared to what I had to endure from Zizka and Kunstadt, your good manners are a welcome change. I'll do my best to make your... Cram और भाई, you know, Crimson भी easily with this piece of crap, useless trash game. हाँ भाई, इसीलिए 99% गेमर ने भाई गेम खरीदते ही दो तीन हफ्ते के अंदर ड्रॉप भी मार दी. भाई कहाँ है लोगों तो लाइक कोई स्टोरी भी नहीं आता क्या चल रहा है गेम में. जो घूम रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, ये इस बॉक्स को उधर डाल, उस बॉक्स को उधर डाल, कैमरा एंगल खुद जुदा पड़ा है. भाई बंदे ने सही बोला, स्टीव ने सही बोला, क्रिम्सन इज लाइक अ बर्गर जिसके अंदर तुमने भाई आलू टिक्की डाली नहीं है. मैंने सीडी खेली तो नहीं, बट यस आई बिलीव स्काईरिम वुड बी मोर फन स्पेशली वी गेट सम क्वालिटी लाइफ मॉड्स. यस. अरे भाई मी एंड आरटी आर जस्ट रोल प्लेइंग चिल मैन. वैसे सच है जो बोल दिया मैंने. Involuntary stay. No more inconvenient than it has to be. Aren't you being a bit too welcoming, Sir Peter? Just what I was thinking. Fuck that bollocks. He's a captive, not some busty wench. He's only alive to squeal what he knows. It'd be quicker if I just beat it out of him. Just a beating? What about breaking a finger or two? Or singeing the soles of his feet? You yourself forced me and Capon to do similar things when you brought that captive to Trotsky. Forced you? Come off it, boy. Should I tell the gentleman here what actually happened? You just keep your fucking gob shut until someone asks you to squeal. Instead of these pathetic threats, why do you not make me an offer? You do know that I am... Shut your trap, Otto. Right now you're nothing. You lost most of your men at Rabos, and the rest croaked to meet it. अरे पढ़ रहा है यार, रुकना. मतलब पढ़ूंगा चैट, ये डायलॉग Nice सुनूंगा. coat and a smug face. Do you really think Sigismund made me his chamberlain because of my soldiers? Or to have someone to take care of the running of conquered fortresses? Shut up, damn it! We're asking the questions. Really? Then why have I not heard a single one yet? And what a shame that is. I am a pragmatic man. And एक बार खेल के देखो किंगडम कम इनसाइड भूल जाओगे. भाई क्रिम्सन डेजर्ट खेल लिया तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बाहर फेंक देंगे भाई, अनसब मार देंगे सारे. ये क्या खेल रहे हो यार? क्रिम्सन का यार नहीं है यार, वो उस गेम में भाई स्टोरी वगैरह तो नहीं है. मन नहीं करेगा मेरा खेलने का यार. पता है ओपन वर्ल्ड गेम में जब तक स्टोरी बढ़िया ना हो ना, इंगेजमेंट नहीं बनेगी फिर मेरी. लाइक देयर आर 9 फैक्शन इन स्काईरिम वी इंक्लूड डीएलसी. राख में मिल जाऊं मैं जैसे एक लम्हा. यू हैव मोर देन 12 हाउसेस टू बाय, यू कैन इवन बिल्ड योर ओन हाउस. भाई तो स्काईरिम अपने टाइम का बहुत तगड़ा गेम था भाई. वैसे लोगों का कोई नया गेम बनाने का प्लान है क्या वो स्काईरिम के डेव्स का? अब तो ये मॉड्स पे ही जिंदा है वो सिर्फ. sure we can work something out. But lay a hand on me, and you will not hear a single word. He's right. Apart from von Aulus, he's Sigismund's closest man. He knows everything about him and his plans. We should try it the peaceful way first. You're buying that? He talks just like Jobst. अब तो विचर 4 ही आएगी सबसे खतरनाक. हाँ विचर 4 भी तगड़ी रहेगी यार. देखते हैं भाई. विचर 4 में तो काफी डेवलपर्स काम कर रहे हैं भाई. आई होप कि भाई केसीडी को बीट कर दे आरपीजी टर्म्स में. मैं चाहूंगा कि विचर में ये लोग ना एनपीसीज वैसे डालें जैसे इसके हैं, कि मतलब अपना अपना लाइफस्टाइल और प्रॉपर पर्सनैलिटी वाला, कि सबका फील होता है एक अपना, कि हाँ अपना पर्सोना है रैदर देन कि बस घूम रहे हैं अपने रोबोटिक. वैसा अगर उन लोगों ने विचर 4 बनाया ना, वो इजीली बेस्ट आरपीजी ऑफ ऑल टाइम बन जाएगी. रोमांस ऑप्शंस आर 66 to 69. भाई गेराल्ट से ज़्यादा पेलता है क्या प्रोटैगनिस्ट उस गेम में? अच्छा उस गेम में प्रोटैगनिस्ट की भी तो वो होंगे ना,
कि जेंडर आप पिक कर सकते हो शायद। मैं तो वैसे मेल ही करूंगा अगर मैं खेलूं भी तो। When he gets here, they can yap till doomsday for all I care. But now we just don't have the time. Jobst wants to come back here. After he got away from us by the skin of his teeth? Well, he has to show Sigismund our army up close. So it's true. I couldn't believe the Margrave had finally made a move. I thought he would never march into battle. See? Fortune is turning her back on you people. A pragmatic man like you ought to recognize an opportunity. If you help us, the Margrave will remember you for it. And will also let bygones be bygones. You're getting ahead of yourself a bit, boy. The crown is still firmly on Sigismund's head, and the Obst won't find it easy to wrest it of him. Although, I expect you people have no idea of the situation Sigismund is in right now. Oh. What situation is he in, then? In the shit, Lord Trutsnov. In the shit. So, a sensible person... भाई मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग स्कारिम को सर्वाइवल गेम की तरह खेलते हैं। मतलब क्या करते हैं ऐसा, मतलब स्टेल्थ बिल्ड बना के खेलते क्या? लाइक इग्नोरिंग द मेन स्टोरी। नहीं, आरपीजी गेम्स में मेन स्टोरी तो इग्नोर करना ही चाहिए भाई। मेन स्टोरी एकदम लास्ट के लिए बचानी चाहिए, पहले साइड मिशन। And I am eminently sensible. Lord Capon. Yes? When you came to Trotsky, you were carrying a message with an offer of an alliance from Lords Hanush and Radzik, were you not? Exactly. I think it is time I gave you my answer. मैं पहले दे देता। A wise decision, sir. But suspicious. Why the sudden change of heart? You think I'm some villain, don't you? But I have only ever wanted what is best, believe me. वन बर्गोव भाई एक What is हिस्टोरिकल best कैरेक्टर for भी this है, मैं एक चीज country, बता दूं। for my loyal supporters, and naturally, for myself. And I'm not ashamed of that. And it appears that Sigismund is no longer what is best. He's in trouble, both here and in Hungary. The army is not getting paid, morale is poor, and the Kuttenberg miners are rebelling. So the crown is running out of silver. I see. The butcher's on his way, so you want to flee the pigsty, eh? Naturally. And together we can even set fire to this pigsty, as you put it. If you want my advice. I'm all ears, sir. The last straw Sigismund is grasping is the royal treasury at the Italian court. If he were to lose his silver, he wouldn't be able to pay his soldiers and would have to withdraw to Hungary. We're supposed to rob the Italian... Like they keep the hardest difficulty and some mods for hunger meter like KCD and make sleep compulsory, removing fast travel. भाई ऐसे खेलना बहुत वो है यार। मतलब बिना फास्ट ट्रैवल के खेला जा सकता है गेम, बट भाई थोड़ा वो नहीं लगेगा? मतलब बार बार इधर उधर चलना पड़ा रहा है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है वहाँ पे। फास्ट ट्रैवल इसलिए इम्पोर्टेंट है गेम्स में। Court, the most secure place in the town? Of course. And while you're there, you can also free the lords captured at Raborj. My father. Lord Pisek, as the former mint master, you must surely know of some way to sneak in. There is no way. The court's an impregnable fortress. Really? What about tunneling in? There are hundreds of tunnels beneath the city, and if I'm not mistaken, one of them runs beneath the court. That's total madness. There might be some passageway leading there, but no one knows those old tunnels now. Besides, they might collapse at any time. One could easily come to a bad end there. But that can also happen when you try to mount a horse drunk. What's with this tunnel? There's a whole labyrinth of tunnels under the city. You'd have to dig from inside the treasury to find the one you want. And where they all lead to, God alone knows. God and me. Oh, pardon me, milady. But how would you know? Not all young noble women devote their days to embroidery, Sir Peter. I look after Father's documents,
and I know all about the plans of the passageways beneath our palace. St. James's Church owes its existence in part to the generous donations of the Rutards. So in the past we had a secret underground entrance built into its crypt. Sometimes gamers do roleplay challenges like marrying and buying a house in X amount of days. Also roleplay like no crimes. भाई नो क्राइम roleplay करना तो मेरे को लगता है आसान है, बट नो किलिंग roleplay मुझे लगता है बहुत मुश्किल है. ये केसीडी का मुझे लगता है ना, केसीडी में मुझे एक चीज़ की कमी लगती है, ये जो वो सिविलियन किल वाला सिस्टम है ना, मेरे को लगता है थोड़ा वो गलत बनाया है इन लोगों ने. मैं सिविलियंस को बिल्कुल नहीं मारता हूँ भाई, 50 पता नहीं कहाँ से हैं. वो नॉर्मल बैंडिट्स को भी काउंट करता है शायद, जो हार मान जाते हैं. And St. James's is right next to the Italian court. A handy escape route from the palace, eh? If you don't mind crawling through a tunnel, that is. In short, you can theoretically walk directly from Rutard Palace to the Italian court. Sure. That is, after breaking through the walls that separate the crypt from the tunnel, and the tunnel from the cellars. My Christ. It's worth a try. That sounds almost too good to be true. And too easy. With a bit of luck, we'll get to the cellars of the court. What then? What do you think? The guards will come down on you and it'll all be over. So we need someone who can help us on the inside. Someone who'll distract the guards and lead us to the silver. उल्रिक को रखो भाई, क्रिश्चियन को नहीं. What about Ulrich Vavak? If we threaten him a little, Ulrich, he might help us. Most importantly, he's got the Mint Master's key. You'll need it to get to the silver. But I wouldn't advise you to rely on the help of that sycophant of Sigismund's. Nor would I. Couldn't your brother help us instead, Lord Pisek? Christian? He can be hard to deal with sometimes. He'd be taking a big risk. And besides, he doesn't have the Mint Master's key to the treasury. I'm afraid Vavak's your only क्या hope. क्रिश्चियन को ना मैंने मना कर दिया था भाई, वो Oh? What's that? कॉइन वाले के लिए. उसने बोला था वो जारी रखते हैं गलत काम. Of a rare visitor from very far away. Who? Do you mean... Surely not. The very one. What the fuck are you talking about? Speak clearly. Well then, a papal legate is on his way to the town directly from Rome. He's coming to adjudicate the dispute about the new church. What's that got to do with us? Where would he be received except at the Italian court, along with his entourage? No one knows them. No one has ever seen them. And very few understand their language. They might as well be volunteering for you to take their place. Well, bugger me. This is starting to sound fucking good. What? What do you mean, take their place? Are we supposed to kill them, or what? Why not? Fuck. We can't. Godwin, say something. You're a priest, after all. You're right. Jesus! Get a grip, fellas. Do you want to burn in hell? Stay in silent तो सबसे घटिया ऑप्शन है इस गेम का, कभी नहीं पिक करना चाहिए. Just lock the up for a bit, and once we've got the silver, we'll let him go again. No one gets hurt. St. Joseph, cover thy ears! Where will we find that legate? He's staying in Loretz, at the vineyard. वैसे if you search in Reddit, there are people who give backstory to their character for the playthrough. Like my character who is a mercenary who hated this faction. Okay. He's got the use of the whole place for himself and his escort. I don't know how many there are. Good. We'll send Catherine there to have a look. And then we'll burst in there and cause a bit of a fuss, so he doesn't get any stupid ideas. And that'll be that. Is there no other way to solve it? Without violence? Gentlemen, the legate is a man of the cloth, like me. I know Latin, and even a bit of Italian too, as it happens. I could explain to him what we need. Maybe we can persuade him to go along with it. He'll tell us to kiss his arse, more likely. Sir Hinek, never underestimate the power of sweet words. Especially when the listener has a knife at his throat. It's true, none of us would be very convincing as an Italian cardinal. It'd be better if we made him take us with him, as his retinue.
But what do we do with the legate's real retinue? Lock them up at the Devil's Den. One of our men can guard them there. A couple more peculiar fellas blabbering nonsense won't look out of place there in the slightest. What if the legate refuses to talk to us? Well, we can always beat him up. Take his clothes and let someone else put them on. Like, Godwin, eh? Since he's a priest. Hold on. I'm not gonna play the jester for anyone. Nobody's asking you to. We stick to the plan. We'll work on the legate so he agrees to take us in with him. Then we'll find a way somehow. All right. Let's say we get inside with the legate. What then? What if he betrays us? That's why we mustn't let him out of our sight. Godwin will take care of that. Me? You said you spoke Italian, didn't you? If he starts squealing, you'll hold a dagger to his ribs and ask him politely to play nice. May God look the other way. Meanwhile, the rest of us will have to deal with the guards inside, prepare the ground for digging, and open the treasury. That's damned risky. No one will be expecting us. As long as we don't make a ruckus too soon, it'll all be over. And the whole place will be ours before they even notice. All right. Can't think of anything better anyway. Agreed then. We'll try gentle persuasion to begin with. And now, to the task! Henry, you go to the town and squeeze anything that could help us out of Vavak. Most importantly, get that key from him. Then wait for us at Rotard Palace, where we'll set up our base. We'll get there first thing in the morning. And how are you going to get inside? The palace will be closed and maybe guarded. I don't expect you want to march through the main entrance, where everyone can see you, and break the gate down while you're at it. That's true, milady. What do you suggest? There's not only a passageway to the church, but also down to the river. I know it like the back of my hand. I could show Henry the way if you like. No offense, my lady, but you'll be safer here. Zizka's right. I can do this on my own. Do you want to get into the court? Then you need Roothard Palace. You want Roothard Palace? Then I'm coming along. All right. Both of you are going to town. And no dawdling. You should be on the road tomorrow at the latest. Time is of the essence. That's that then. Let's get to work. Also, there are challenges run like becoming millionaire only with honest work, meaning no stealing, no killing, crafting item. Okay, oh yes, you could craft items like in KCD too. कैसे type के? It looks like the two of us will be going to Kuttenberg alone. I can hardly wait. Aren't you looking forward to going home? When they captured Pa, Von Bergov's people came to Rutard Palace. Did they do anything? Just minus the realism. No, I wasn't harmed. But before they took me away, they ransacked the place. Then Von Bergov just took me to Malashov. It's likely Vavak took our home for himself. He's always threatened to do that. You can try. When we free your father, Rutgard Palace will be yours again. I hope so. But that's still far from certain. How do we even get inside Rutgard Palace? Like I said, through the underground. Well, I suppose by now I ought to know you don't have back doors here. Just secret passages, eh? You are in mining country, you know. There's more going on here below ground than above. How will I find the entrance this time? From the position of some cross again? No, I'll guide you this time. It's just below the walls. You only need to know where to turn. Are you ready to go? There's no point in dallying. Actually, there's something I need to take care of first. I'll be right back. What will happen to von Bergov now? What do you think? He'll stay here. Pisek will watch him. Good night. Good night, Gaurav bhai. Well, he may not be as pretty. You know, like weapons, armor, pendants, rings, gems, potions, gold bars, silver bars. You can cook too. Yeah, sahi hai yaar. Rutard's daughter. But he could get some more useful information out of him. What will you do when me and Lady Rosa go to town? We need to fix ourselves up. We've got some wounded to take care of. We also need to work out some details of our plan. Such as?
That retard passageway will help us. But it's only the first step. We need... पुरानी चैट तो पढ़। है कहाँ पुरानी चैट आपकी? गुड नाइट के ऊपर आपकी कोई चैट नहीं दिख रही। बाइटी ने हटा दिया आई थिंक, देख रहा हूँ। गुड नाइट इसके ऊपर से पैरासाइट और आरटीवाई की चैट से नहीं है आपकी भाई, आपका वो वाइटी ने हटा दिया है। To know how the court runs, and then what we'll load the silver onto, and where we'll take it. And, just in case, we need to know escape routes from the town. What did you think of von Bergov's interrogation? Oh, well, no blood was spilled. Nobody got tortured, and Otto kept all his fingers. So if you ask me, it went nice and peacefully. Isn't it strange how von Bergov suddenly bends over backwards to help us? Not really. He's a selfish fucker who goes where the wind blows in his favor. Actually, I kinda like that about him. Is there any chance we could actually pull off this robbery? Only if everybody does what they're told. You included. I thought that was water under the bridge. I'd love to forget that beating, believe me. But the body gets old, and every new wound takes longer to heal than the one before. Now you sound like some grandpa with one foot in the grave. Watch that grandpa doesn't tickle your belly with a knife in the night, you cheeky bugger. But hey, let bygones be bygones. Actually, it's a good thing we didn't have to slaughter those dung grubbers. But now you have to listen to your elders and betters. Got it? But what if the plan falls apart? I won't lie. There's a very high chance some things will go belly up. राम राम गौरव भाई, राम राम। क्या लिखे थे पहले ये तो बता दो। One of my favorite type of scaring roleplay was playing the game for X amount of days without leaving a particular city of or region. ये तो मैंने किया भाई, केसीडी में एक तरह से मैंने किया तो है कुटनबर्ग सिटी में। If it does, we'll all be praying for a quick death. You're not serious about praying for a quick death, are you? You fucking bet I am. Getting caught with Sigismund's silver in our clutches would be the beginning of a very long and fucking painful journey to the afterlife. How does von Bergov seem to you? He's not nearly as threatening now. Uncharted 4 की फाइनल लाइव स्ट्रीम ऑन नेक्स्ट संडे। ओके भाई ठीक है। Ale ta dzierlatka, którą ukrywa w wieży, jest warta grzechu. Piękna, młoda, wzór cnót niewieścich. Gdy jednak zaciągniesz się do wyrka, to będziesz rad, że dożyjesz rana. To widać od razu. She Ruthard's daughter, you pig. No hostage. She on our side. Tym lepiej. Myśmy ją przecież oswobodzili. Jeśli jest dobrze wychowana, to miałaby się nam wszystkim odwdzięczyć. Is he talking about Rosa? He just say she is बेटा सब समझ आ रहा है भूसड़ी ये। very fine lady. No more. बेटा पिट जाएगा ये सब बकवास मत कर। पिटाई हो जाएगी ये सब बोलने पे। Did you hear what was arranged with von Bergov? Of course, but I don't even have the will to shake my head anymore. Is there something you don't like about the plan? Don't like? You lot have gone mad. First, you... Well, you were in Gutenberg City only because you had to do side quest. ये तो है। अभी आई? क्या आई? हाँ चैट आ गई। पढ़ लिया मैंने Uncharted 4 वाली। Bring von Bergov here in shackles. Then you let him put a flea in your ears about how to outsmart the king? And now you want to walk right into his people's clutches? Have you taken leave of your senses, for Christ's sake? You make it sound like things were different before with Zizka. You bet your ass it was different. He didn't act like a fool.
and only took actions that could actually succeed? Save. You silly doggy. Do you really believe our plan can succeed? You'll need a big dose of luck, but I think it might just work. तो सब आ जाना नेक्स्ट संडे से ना। यस यस, देखूंगा अगर टाइम रहा या जागा रहा तो आ जाऊंगा। Move to several locations, various safety measures, evaluation of all possible risks, but we don't have time for that. What are we going to use Sigismund Silver for? Don't count your chickens before they've hatched, lad. If you really do get your hands on the silver, you need to get away with it first. As far as possible. Margrave Jobst will find some use for it later. Or do you have any other suggestions? Samuel's people were hiding Liechtenstein, and we also took Malashov due to their coin. I'm sure they earned their share. You're thinking of those who are most in need. Excellent. But most of the Jews fled the town, and I doubt they'll return anytime soon. And what if our plan fails? Then you'll have to hide or defend yourself. King Sigismund will not let something like that go unpunished. You'll either have to flee across the border, or count on influential allies. And if not influential, then at least strong. I'll also be punished, of course. I'll lose my keep, my estates, my position, and finally, maybe even my life. We better try our damnedest then. When everything's at stake. Yes, that will be a wise approach. Lady Rosa seemed right at home during von Burgov's interrogation. That she did. She really is her father's daughter. She has her late mother's beauty. God grant her eternal peace. But she really got her personality from... मैं एक पोस्ट भी डाली है वाईटी पे। हाँ भाई देख लिया, कोई नहीं आएगा, गौरव ऐसे बुलाएगा तो जिसको जाना होगा अपनी मर्जी से आएगा, बार बार मत सही कहा शुभांकर भाई। अब मैं भाई तूने परेशान कर लिया गौरव एक चीज को बार बार। शुभ भाई बाय द वे मैं थोड़ा मेन स्टोरी पे हूँ, तो मैं कहूँगा अभी आप भी हट ही जाना क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखो वहाँ प्रमोशन। Had she been born a boy, Rutard would have had an heir other men could only dream of. Do you also find it strange how quickly von Burgov turned his coat and started helping us? Indeed I do, but there are several likely explanations. The king's position in the country is even more precarious than thought, and his allies are leaving him in ever greater numbers. But what would von Burgov stand to gain if Sigismund returned to Hungary? That I do not know, and I fear the day we find out, because if I know one thing about Otto, it's that he never acts recklessly. I know one thing about Otto, is a historical figure. जहाँ देखो वहाँ पर यस यस मैं नहीं देख रहा गेम। ओके भाई बेशरम इंसान है। अरे नहीं भाई सौहागे का तो गेम देखो। अरे भाई वो शुभ भाई भी तो खेल, उनका स्पॉइलर हो जाएगा भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना देखो। तो भाई पीटर ऑफ P6 मेरा बात कर ली जिससे करना था मुझे। देयर शुड बी अ गुड RPG सर्वाइवल गेम। कैसे टाइप की, मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट? ये जो है ये DLC वाली क्वेस्ट है जो कि मेरी एक डायलॉग करके खुली है, लेकिन ये मैं मेन स्टोरी के बाद करूंगा। अभी मेरा फोकस रहेगा मेन स्टोरी के मिशन पे। फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से जस्ट पहले
रून्स वगैरह भी एक्सप्लोर मार लूंगा ये सब। ये देख रहे ना, वाटर होल ये सब एक्सेट्रा। Good afternoon. How's it going, Captain? What of it? Zum Glück nicht. If you're looking... Looks like someone's happy to see me. Yes, yes. Magic hands, you say? What else do you like? शुभ, तुमने बैटमैन आर्कम सीरीज खेली है ना? उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? आर्कम नाइट फर्स्ट, आर्कम असाइलम लास्ट। वेल देयर आर मेनी ऑप्शन। यस, यू कैन टेल मी। Good afternoon. भाई माल लड़की है यार। I'd like to use... Sir. Do you have some pretty girl here? बेटा थोड़ा Keep me company. इससे Don't इससे तो worry. ना हलवाऊंगा Once my खुद को। girls get their hands on you, you'll forget all your sorrows. At least for a little while. I can't wait. I can't wait. Great. But it'll cost you. Let's talk about the... Certainly. अरे नहाने के लिए कौन? You must ले 25 रुपए certainly में won't नहला। regret it. My baths are first class. I want Catherine. पता नहीं कब ऑप्शन आएगा। Don't worry, lad. It happens. मादर चोद, क्या है ये? अबे आवाजें क्यों नहीं आई बे? मैं उस हट हट हट। अबे यार उसी के लिए तो मैंने पेमेंट किया था यार। हट साला स्किप कर दिया साला गेम ने अपने आप सब। ये क्या बात होती है? शुभ भाई मेरी तो 2 लोगों पे नजर है अभी फिलहाल, बट अब बताऊंगा नहीं कौन कौन है क्योंकि आगे आएगा स्टोरी में आपके। लाइक आई सेड, पीपल ट्राई टू मेक स्काईरिम एंड फॉल आउट सर्वाइवल गेम विद मॉड्स। हाँ तो आप चाहते हो डेवलपर्स कोई अपना खुद से बनाए, समझ गया? हट। अबे भाई मैंने इसको 25 रुपए दिए भाई, मेरे को वो आवाजें सुननी थी भाई। I'll keep it to myself. Next time, we'll take care of it right away. Christ, pardon me. सॉरी। हट साला यार, मैं सारे 25 मेरे 25 वापस दे मुझे। भाग यहाँ से, मुझे मेरे 25 वापस चाहिए। नहीं रहने दो। भाई ये देखा सही है मास्टर वाली स्किल। सो आई हैव असाइलम सिटी नाइट्रोजन, विच शुड आई प्ले फर्स्ट? गूगल कर लो भाई। द गुड थिंग इज गुड आरपीजी मस्ट हैव गुड स्टोरी। अबे यार ये आसार है। द थिंग इज गुड आरपीजी मस्ट हैव अ गुड स्टोरी बट अ सर्वाइवल गेम अवॉइड अ गुड स्टोरी। यार ऐसा नहीं है, अच्छी सर्वाइवल गेम भी अच्छी स्टोरी रख सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल गेम की स्टोरी अच्छी ना हो तो चलेगा। भाई बिना कपड़े के कितना पतला लगता है ये। ओए नंगे, आई डोंट नो स्टोरी। ओके ओके थैंक्स। इंग्लिश में लिख देता हूँ, लगेगा सही बोल रहा हूँ। यार कौन सा सर बस सर्वाइवल गेम में ऐसे थोड़ी है स्टोरी अच्छी नहीं होनी चाहिए, कई कई गेम्स में होती होगी। अब रेसिडेंट इवल 8 को ही देख लो। वैसे तो एक्शन गेम ज्यादा है, आई कैन एग्री, बट स्टोरी है अच्छी उसकी। सर्वाइवल एक्शन RE7 का देख लो। चलो गुड नाइट सबको, सवा गए तो केसरी में ही सोएगा। हाँ भाई मैं इसी पागल हूँ यार। लेडी रुथाट है गई कहाँ भाई? इसको एस्कॉर्ट करना। अच्छा यही रहेगी ना जब तक मैं इसको एस्कॉर्ट नहीं करूँगा। ठीक है। अरे यार इससे मेरे को बात करनी। ये साले दोनों एक ही कमरे में सो रहे हैं।
गे गे लोग। अबे सर्वाइवल गेम बोला, सर्वाइवल हॉरर नहीं जो आरी घुसा दिया। अच्छा ऐसे ना, ये सर्वाइवल वगैरह में हॉरर दिमाग में पहले आता है। ये वाला देख के मुझे वो याद आता है भाई, वो ट्रॉस्की में था ना वो ब्लैक स्मिथ, 3 बार काटा था उसने मेरा डीमंस ऑफ ट्रॉस्की क्वेस्ट में, हगास दिखा के। वो टाइम क्या हो रहा है? हाँ ये नहाने का बाद का है ना, ठीक है। Don't worry, lad. It happens. I'll keep it to myself. Next time, we'll take care of it right away. I thought people like you would abhor defection. I'm your hostage. I appreciate being treated well, and I don't hesitate to reciprocate. That is all. You want to buy your safety by snitching on your own allies? What snitching? Sigismund's precarious position is no secret. And I don't have to worry about my safety, do I? Lords Capon and Pisek have sworn that no harm shall befall me, assuming you can keep that Jew in mind. You'll be nothing but a traitor to Sigismund and his people. If you attempt to steal the silver, you will draw all attention to yourself, whether you succeed or not. They will hunt you like vermin. And my so-called betrayal will be the least of their concerns were quite the one. You pretend to be the Lord of Lords, but had no qualms about taking a defenseless woman prisoner. You should be ashamed. I would feel more ashamed if I hadn't taken her hostage. If I learned you laid one finger on her... Calm down, Sir Knight. I took her to Malashov to make sure nobody would hurt her. There were many in Kuttenberg looking for a way to blackmail or at least humiliate Rudolf. And a pretty young daughter like that is the perfect means to that end. Do you not think? I hope she's been treated well. As you say, she is Ruthard's daughter and heiress. Don't worry. I personally made sure she never wanted for anything. First you have Ruthard imprisoned, and now you're helping his daughter. Why? Can you imagine? I don't like unnecessary violence. Especially violence against the fair sex. Moreover, that Ruthard girl is a remarkable young lady. Despite her apparent aloofness, I must say, I was quite charmed by her. And so were you, judging by how much you ask about her. That's none of your business. So be it. But I advise you to hold onto her tooth and nail. She is smarter than all of you put together. I hope it's not too comfortable for you here. Just say the word and I'll arrange it so you can sleep down in the cellars. No need to worry, lad. Being under one roof with Zizka and Kunstadt is torment enough. I'd never have thought it'd be so easy. Getting revenge on you, I mean. First Istvan Toth, now you. And tomorrow... By tomorrow, you may all be dead. Actually, I would say that is becoming more and more likely. Would you like to know how Istvan died?
इसलिए What भाई it sounded like when he fell out आराम of से that कर रहा था window and got सब smashed on the सुनने के rocks लिए। below the tower. You seem to be laboring under the naive illusion that I cared about Darth. You killed a murderer and a fool. All you achieved by that was saving us the trouble. Don't try that tough talk on me. You're afraid, aren't you? Afraid of what? You? Of not being firmly in charge for once. You have to dance to someone else's tune. And that terrifies you. An interesting idea. I will remember it when I am dining with Lord Pisek, and you are picking up crumbs outside somewhere. जा भाई। भाई यही सब बातें सुनने के लिए मैंने तुरंत जाने को वो रोक दिया था कि अभी तुरंत नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगा था डायलॉग्स आएंगे। We've lasted another day. Good evening. Come here. अबे इधर सही है, हट खड़ा यहाँ से। Christ, pardon me. Rain's refreshing. I know what you mean. Shall we go? There's no point in dallying. All right, let's go. Well, here we are. I'm not keen on going into that darkness. Are you afraid? Of the dark? Me? I'm not a little girl. But God knows what we'll find inside. Especially at the far end. I'll be with you. If anything happens, just stay behind me and... Ah, my hero. But since I'm the one who knows the way, I'll be going first. Usually there's only a small trickle running through here. The water must have risen. How far away is it, anyway? Soon there'll be a fork, and from there it's only a short distance. You'll see. And where does the passageway end? In the cellar, conveniently enough. It's always best to arrive inconspicuously. Anyway, what's Lord Capon's problem with underground passageways? When I mentioned it at Supdog, he looked like he was about to faint. Well, when we were defending the Barkov, we got buried under the rubble from a demolished tower. Oh my god! He was lucky to survive it. I still remember him calling for help. We were scared to death. There was nothing we could do. That's when he was captured by von Berghoff. Since then, he's not comfortable with
tight spaces. Sorry. I was a silly goose to bring it up. Everything all right? No. Don't you see how deep it is ahead of us? Well, so what? It's hardly more than knee deep. That may be so, but a courteous man should offer to help a lady. Well, what's to be done? I'll carry you over. Don't worry, though. I'm not some fragile petal. I'm waiting. This is not how one carries a lady, you barbarian. Maybe not in Kuttenberg, but it's how we did it in Skalitz. But it's not very comfortable. Ah, just मैं grin तो and ऐसी bear जगह it, तुम लोग lady. ये सब कर रहे हो. We're almost there. भाई हेनरी में स्ट्रेंथ तो है भाई. मैं ना कर पाता भाई ऐसी जगह. एक हाथ से मशाल पकड़ा है, एक हाथ से लड़की पकड़ा है. Oof, I don't think you'd be welcome at a royal court. But I am dry, so I thank you. Oh, Sakura. I hear voices. Looks like we've got company. And not welcome company, I reckon. Look at all this mess. I can hardly recognize this place. This doesn't look like the work of Avak's people. More like city rabble and beggars. They're acting like they own the place. If Pa were to see this, we must get rid of them. What do you mean, get rid of them? You killed most of von Bergov's garrison at Malashov, and now you want me to tell you what to do? My. How quickly Lady Rosa can change her mind. What's the difference between those ragamuffins upstairs and the villagers at Malashov, eh? But this is our home. Our property. They have no right. Folk who have nowhere to lay their heads and nothing to eat aren't much interested in the troubles of the rich. They just seize the opportunity. You're right. But they can't stay here either. They'd give us away. So you want me to get rid of them? But what will you do? I'm responsible for keeping you safe. Don't you worry. You don't have to hold my hand in my own home. Do you see this ivy here? It goes all the way up to the window of my chamber. That's where I keep my crossbow. I bet that riffraff didn't find it. If I climb up there, I can cover you from above. Just in case. What? Are you crazy? You can't climb such a height. Oh, don't worry. Nah. I've been climbing up there ever since I was a little girl. But they'll see you. No, they won't. I'll be round the corner before they have a chance. There's a wooden balustrade there all the way to the window. It's like climbing a ladder. Are you really sure that Ivy can support your weight? You're not a little girl anymore. You really know how to compliment a lady, hey? Now keep quiet and turn round. I don't want you looking up my skirt. Right then. Here we go. I hope Rosa can aim well. Look! There's someone there! You're trespassing. This place belongs to the House of Ruthard. You're wrong, friend! The Rutards have finished in this town.
We own the place now. What are you gonna do about it, fucker? I'll show you. Don't try that on me. I surrender. Sucker. Rosa? Could you... Rosa! यार एक तो लोग दरवाजे बंद नहीं करते, थक गया हूँ बता बता के, बंद कर दिया करो। को यार टॉक इट ओवर एक बार ट्राई करना है मुझे। I don't really always have to kill. टॉक इट ओवर का ऑप्शन आएगा तो, वरना तो किलिंग पे ही जानी पड़ेगी बाहर। Going. Calm down. I just want to talk. I'm not looking to harm you. Talk, eh? You don't want to harm us? Hark at him. Let's get rid of him. What do you say, fellas? To hell with you. भाई मतलब स्क्रिप्टेड ही है, इन लोगों को मारी खाने आए हैं लोग। ठीक है भाई, मारो सालों। अब क्या ओरिजिनल डायलॉग लेके पेलूंगा इन्हें। Easy for you to say. Who let you in here, fucker? You're trespassing. This place belongs to the House of Ruthard. You're wrong, friend. The Rutards are finished in this town. We own the place now. What are you gonna do about it, fucker? Now you're gonna get it. Sucker. Rosa? Oh, Could you... hey! Rosa! Take that fucker out, damn it! I'll shove steel up your ass. You want to try me? You... To hell with you! I'm just getting warmed up, you shit! We're gonna gut you, you horse. Show your stuff! Do it! Are you alright? For now. Are you all right, Henry? I think I hit one too. You're a good shot. Capon and Kabianka wouldn't believe their eyes. Thanks. Is something wrong? Someone's trying to break through the door. Damn it. I'll be there in a moment. Be careful. Load your crossbow, and if they get inside before I get there, shoot them. I barricaded the door. I'm sure I can hold out for a while. What a mess. I've been waiting for you. Burn in hell! I'll beat you to a bloody pulp. Fucker. भाई साहब Get an axe. Rosa? It's me. Henry, are you all right? I'm in one piece. Are they gone? All of them?
Rosa? Are they gone? All of them? Aye. It's over. All right. I'll let you in. You can come in now. So, here we are. Welcome home. It doesn't feel much like home anymore. They were behaving like animals in here. Don't worry about the mess. Our boys will happily clean up once they get here. We owe you that. The mess is the last thing on my mind. There was my mother's silver, my brother's hunting trophies, and my books. It's all gone. Right. We've got a lot of work to do. But we'll get there. You'll see. We have to. There's a lot at stake. That's true. You know, Henry, I want to ask you something. Yeah. I want an honest answer, all right? If everything were to go wrong at the Italian court, and God forbid you had to choose, would you still try to rescue my father, even if it meant putting stealing the silver in jeopardy? The lives of allies are obviously the most valuable asset to us. Without their support, the silver would be useless anyway. Not to mention, it wouldn't last you very long anyway. Don't worry. We'll either leave the Italian court with the lords, or... Or not at all. If our plans succeed and your father is freed, do you know what will come next? I try not to think about it. Why? That's why you're helping us, isn't it? If you get the king's silver, my father and I will have to hide. Leave the region, go somewhere out of Sigismund's men's reach, and you and I will have to part ways. Maybe it won't be necessary. As soon as Jobst and his troops arrive, you'll be safe again. Maybe. But your duties are elsewhere. Capon's estate is in Ratai. Besides, he'll be getting married, and you'll surely be accompanying him. Why should my father and I stay here anyway? What do we have left? ले बेटा You'll be all right. I'm here at the right time. Yes, you are, sir. You are. My father would clap you in irons for that. And for this. अरे बेंचोस प्लीज भाई ज्यादा ज्यादा मत करना भाई नो नो प्लीज ज्यादा नहीं तो कोई आना जाए Our lady should be carried. Where to, ma'am? I don't see any rivers, ditches, or puddles to cross. Dami castitatem e continentiam, sed non in modo. Forward, sir knight. भाई कुछ ज्यादा एक्सट्रीम ना आ जाए बस भाई कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो तो बता दे मैं आओ ना हाँ सर ज्यादा नहीं था मैं तो केथरीन को रोमांस किया था देखते हैं उसके साथ भी शायद ऑप्शन आ जाए यू विश यू न्यू लैटिन मेरे को लैटिन सीखनी पड़ती क्या गेम में तो शायद
ये कैनन पार्ट है कि मतलब लैटिन आती नहीं है। Oh, Christ. Is it morning already? Zizka and the others will most likely be here by now. I should go and have a look. अरे तू टोपी मत हटाया कर भाई, अच्छी लगती है। You know about yesterday evening and night? What about it? Well, I thought maybe you want to talk about it. Do you think there's anything to talk about? Well, what's next for us? Nothing, most likely. I'm Lord Rutard's daughter. Our name still means a lot, despite all the trouble we're in. When my pa is free and an opportunity presents itself, I'll have to get married. And what if your pa found out about us? What exactly would he find out about? That his daughter is no longer, Virgin. entirely chaste? Someone would have to tell him. It certainly won't be me, and I recommend you keep quiet as well. Are we clear? Quite clear. Although, maybe it won't even matter. Our plan may very well fail, and no one might survive. Why throw something nice away prematurely? You know, carpe diem et memento mori. Well, if that's how you feel. यार बट केसरीन के साथ अगर ऑप्शन आएगा तो करूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका भी लेडी स्टेफनी जैसा हाल होगा। वो तो वक्त बताएगा भाई। वैसे आप श्योर हो क्या कि केसीडी 1 में वो लेडी स्टेफनी को का हेनरी वाला ही था? आई मीन लॉजिकली तो वही लगता है, क्योंकि यार सर्दी विशु उम्र में नहीं कर सकते। यू नो राइट बाय नाउ। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, वो तो कब कब रिवील हो गया। मैं सारे ऑप्शनल डायलॉग्स पिक कर ही लेता हूँ, मिस करना मैं बहुत रेयर है मेरा। मेरा कैनोनिकली हेनरी और लेडी स्टेफनी ने करा था साथ में। मैंने भले ही अपने प्ले थ्रू में मना कर दिया था, बट कैनोनिकली हुआ है। इस उम्र में सर्दी विश तो नहीं कर सकते भाई। Handscape on. देखते हैं भाई, केसीडी 3 में ही पता चलेगा वो तो। So you're already here. How was the journey? Did you run into any trouble? No, it actually went quite well. Brabant wouldn't shut up, though. Credit where credit's due. He really helped in Malashov. That hit to the gate came at just the right time. We'd have dropped like flies if not for his men. But sometimes, I feel like letting something blow up next to my head, too. Don't worry, एंडिंग में हैंस और हानुश के डायलॉग्स कंफर्म कर देते हैं कि बच्चा हेनरी, कर देते हैं कि बच्चा हेनरी का है। अब भाई बताने की जरूरत क्या थी यार, आपने पहले ही पार्टी स्पॉइल कर दी। वैसे हाँ, लॉजिकली सेंस तो वही बनाता है। सर्दी भी देयर इज नो वे कि वो उस एज में कर पाए। Just so as not to have to listen to him for a while. I'd be more interested in hearing what happened here yesterday. When we got here, it was like a pigsty. Some local beggars set up a lair in here. We have to get rid of them somehow. What about Rosa? Doesn't she regret coming too? Why would she? She asked for it herself. Mainly because you were going. She doesn't seem to like the rest of the group very much. It's not like you're doing much to change her mind. And the way things look around here certainly didn't improve her mood. We may be bastards, but we're not ungrateful. Anyway, I told the men to get rid of the bodies and clean up the place a little. Hope the lady won't mind. Quite the contrary, I think. How did it go with Vavak, anyway? Well, after everything that happened, I didn't want to leave Rosa here by herself. I'll have to go and see him now. I understand. But go and see him as soon as possible.
We won't get anywhere without his Mint Master's key. अरे वो साइड में बातचीत करते हैं. You can only listen if you listen carefully. भाई अगर मेरे से मिस हो जाए ना बाय चांस, मेरे को ना YouTube पर वो भेज देना, YouTube का वो मतलब YouTube पे भेज देना वो कॉन्वर्सेशन YouTube वाली, मतलब मुझे DM कर देना डिस्कॉर्ड पे. चलो अब जरा मैं बाबा के पास जाता हूँ. Not a soul around. Very odd. What the? Henry? How the hell did you get in here? I have my ways. All right then. Keep your secrets. What are you doing here? I could be asking you the same thing. But I've got a different question. How much did they pay you to tell them about the Mint? Vivek was stealing from the town. And I could happily continue if you weren't such an honest idiot. Instead of which, I was almost caught and hanged. Fanush, Milosh, come here. Defend yourself. Or don't. At least it'll be easier. अरे यार एक क्रिश्चियन. Fucking hell. Show your stuff. भाई ये मैंने चोरी करने के लिए मना कर दिया था, इस बात के लिए भाई ये हो गया ये. वैसे एक बात बोलो, KC2 में जिन्होंने द मिशंस वर वेयर यू हैव टू डू वन वर्सेस मेनी. हाँ अच्छे थे भाई, अच्छे बनाए इन्होंने. भाई क्रिश्चियन ऑफ पीशेक मुझे इसलिए इसने इस पे अटैक किया क्योंकि मैंने इसको मना कर दिया था चोरी के लिए. लाइक वन ऑफ माई फेवरेट वॉज एक्सोडस. भाई एक्सोडस वॉज लिटरली लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. मुझे भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ बास्टर्ड्स की थोड़ी बहुत याद दिला दी उसने.
बहुत तगड़ा था वो, बहुत ज्यादा एपिक था भाई। मतलब बहुत टफ भी था भाई। मतलब वो मिशन ना टेस्ट होता है प्रॉपर कि तुमने गेम ढंग से एक्सप्लोर किया है कि नहीं। अगर तुमने नहीं किया एक्सप्लोरेशन ढंग से ना गेम में, तो वो मिशन खेलने में बहुत दिक्कत होगी। लास्ट में ऑरा क्रेजी था भाई वो, मतलब पूरा ढेर सारे सोल्जर आ जाते हैं सामने से, मतलब बहुत तगड़ा था वो भाई। क्रिश्चियन और पीसेक को मैंने मना कर दिया था ना चोरी वोरी का काम कंटिन्यू करने के लिए, तो भाई ये हो गया भाई। नॉर्मली गलत काम करने से प्रॉब्लम आती है, यहाँ गलत नाम ना करने की वजह से मेरे पे अटैक करा इसने। आपने वैसे क्या किया था अपने प्ले थ्रू में, आप बता सकते हो? आपने हाँ किया था उसके काम पे कि ना कर दिया था? वेल इट वॉज मेंट टू बी हार्ड एनीवेज। यस आई डाइड 5। भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने फर्स्ट ट्राई कर लिया था, फर्स्ट या सेकंड ट्राई कर लिया था मैंने, हो गया बस मुझसे। वो टास्क क्या है यार? गेट द की टू द रॉयल। I mean, logically he was stealing from Sigismund, so I agreed. हाँ मतलब वैसे तो सही है, लेकिन मैं थोड़ा इस वे में सोच रहा था ना, मैं थोड़ा पॉलिटिकल वे में सोच रहा था। मैं थोड़ा मतलब पॉलिटिकल वे में ज़्यादा सोच रहा था कि कहीं मेन स्टोरी में इसका भारी कॉन्सिक्वेंस रहा हो। मतलब मैं एक बंदे को पकड़ना चाहता हूँ फॉर डूइंग द सेम एक्ट, और मैं फिर वही चीज़ कंटिन्यू करूँ, तो कहीं वो चीज़ बैकफायर ना कर जाए मेन स्टोरी में। मैं उस वे में सोच रहा था एक्चुअल में, समझ रहे ना? मैं उस तरीके से सोच रहा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती चोरी चकारी में, मैं खुद चोरी चकारी करना है वो करता हूँ भाई। मैं खुद चोरी चकारी का वो हूँ, मेरे को गेम में चोरी चकारी कर। बट जब दूसरे कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना किसी काम में, तो वहाँ मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ। वहाँ मुझे फील होता है कि शायद गलती होगी ये काम करना। मैं नॉर्मली मैं खुद चोरी को वो करता हूँ, इम्ब्रेस करता हूँ इस गेम में। बट वहाँ पे मुझे फील हुआ कि कहीं वो मेन स्टोरी में भारी ना पड़ जाए बाद में जाके कि क्रिश्चियन ही मर गया ये, या रूथार्ट्स पे कुछ इल्ज़ाम लग गया बाय चांस, कुछ भी हो। मतलब ये केसीडी में ना दिमाग बहुत लगाना पड़ता है ऐसी चीज़ों में, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि कुछ मेरा लालच भारी ना पड़ जाए, तो मैंने इसलिए मना कर दिया। केसीडी भाई बस वही है ना, रियल लाइफ जैसी ही एनपीसीज है भाई। बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना, तुम नहीं भी एक्सपेक्ट करोगे तो भी हो जाए। मैं को चोरी तो कर लेता है यार, बस सही रहता है यार। अब भाई पता नहीं है मेरे को पीटर ऑफ पीसेक को बताने का मौका मिलेगा क्या कि मैंने तेरे भाई को मार दिया, उसने मेरे पे अटैक करा था। और रुको ये टॉर्च ले लेता हूँ एक्स्ट्रा भाई, एक ही टॉर्च है मेरे पे। Maybe another time. I'm not hungry right now.
आया जरा। बाय द वे, आजकल कितनी सारी एड्स में लोगों ने घुस, अरे बहुत ज्यादा यार, टू द पॉइंट इट्स अनोइंग भाई। वो एक ऐड आ रही है डार्क वर्ल्ड सर्वाइवल वाली, वो पिछले साल भी आती थी, लेकिन वो एनिमेटेड थी पहले, पिछले साल जो आ रही थी उसमें कुछ म्यूजिक बजता है, डार्क वर्ल्ड सर्वाइवल, और zombies होते हैं, बच्चे ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे करके वो ऐड आता था। अब इन लोगों ने कुछ नया ही ऐड डाल दिया, मोटा सा बंदा भाई, क्या बोलते हैं, शेल्टर बना रहा है अपना, उसका क्या ही वो मतलब, बस झाटू झाटू से ऐड आ रहे हैं बहुत। मैं आया जरा। वेल, बड़े ब्रांड्स तो एआई यूज नहीं करते, बट ये नए ब्रांड्स कितना ही घुसाते हैं, बहुत ज्यादा यार, अनॉय कर रहा है। Search. अरे कहाँ मिलेगा यार एक की?
Well, that really is disgusting. Fuck you, बहुत ज़्यादा. Valak, wherever you are. Go to heaven. The prelate spout empty words. Good morning, Henry. Morning. Verdammt! Hello, Rai, random bhai. Hello, random. Welcome. The very fact I didn't kill you the instant you touched me testifies to my gratitude. Why? You're threatening her. I was at the Mint Master's place. Hold on. Everybody should be hearing this. Well, how did it go? Do you have the key? Aye, I've got it. स्पाइडरमैन जाओगे 31 को? 31 को नहीं, 30 को ही आ रही है, बट हाँ जाऊंगा पक्का. पहले दिन जा पाऊँ उसकी तो गारंटी नहीं है, बट जाऊंगा पक्का. अब देखूंगा ये मैं. Stinks a bit. Quel puanteur! Put it away unless you want to see my breakfast. What about the Mint Master? Will he help us out? Valak has disappeared. I found the key in his house. But I also met Christina Pisek there. He tried to kill me. Good thing he didn't succeed. How did that end up? He's dead. At least he won't rat on us. The main thing was to get the key, and we did. What's worse is that we don't have anyone inside the court. Well, can't be helped. Let's get to the point. We must have everything ready before Catherine returns from Loretz, especially the way through to the court. I should say so. If I'm going to send my men, I have to know exactly where the way through is to be made. That'll be your job, Henry. And Brabant's going with you. Excuse-moi? हाँ भाई, रायन गोसलिंग को घोस्ट राइडर बना दिया भाई. बढ़िया. बहुत लोग वेट कर रहे थे भाई, घोस्ट राइडर को लेके कुछ हो जाए अनाउंसमेंट. भाई मिल गया. Why should I? Because you've been telling us you know the Kuttenberg Underground like the back of your hand. And I do, but not firsthand. Only from mind maps and drawings. Nobody will let men of my standing enter those moldy shafts. Where are the others, anyway? Kubienka, Ada, and Janos. They heard there was work to be done, so they left à l'anglaise. But you do the work of 3, eh? At least with your mouth. They're getting some wagons so we can move the silver. If Pisak wasn't lying, there's quite a haul there. What exactly are we supposed to do in that cellar? Get as far as you can, and mark the spot where Brabant's men will start digging. I see. Why do I feel like that sounds a bit too easy? Well, we have no idea what's really down there, so you'd better have a weapon handy. Come now. Surely you do not mean... Rutard's daughter will tell you more. She came up with this part of the plan. If Brabant doesn't want to go into the tunnels, I'll go with someone else. With Ruthar's daughter, eh? One night wasn't enough for you. I meant with somebody like Sam. He knows his way around the town underground too. Oui. That is a good idea. Why not? Maybe the cold down there will cool his hot head. मून नाइट को तो उस यूज करके फेंक दिया. मैंने देखी नहीं मून नाइट सीरीज, बस तारीफ सुनी. हाँ, मून नाइट क्या सीरीज थी, उसको यूज करना था. आगे भी लेट्स सी क्या होता है. यार बहुत सारे अभी प्लान है इनके पास. क्या ही करेंगे अब, देखते हैं. What will you lot do in the meantime? We'll be doing the planning. We've got to bring those captured Italians to the Devil's Den somehow. They'll just sit tight till we give them back their legate, and then we'll let them all go. The main thing is keeping Godwin away from the booze. Or we'll have no way of talking to the gents from Rome. I'm gonna go explore the underground passages that lead to the Italian court.
Can you tell me more about them? What exactly would you like to know? Where exactly are the tunnels? They run under most of Italian Street. आई होप कि मून नाइट डूम्सडे में आए. देखते हैं भाई, डूम्सडे के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है. Some are remnants of the original mine gallery, but other parts are much more recent. So far, only the section from Rutard Palace to the crypt under the church is accessible. Well, the church is quite a long way from the core. If the tunnel has collapsed anywhere, we're out of luck. Right. But the tunnels were checked properly before they started building the church. If some part collapsed, we'd be the first to know. What was the tunnel to the crypt used for? It's a safe route for anyone who wants to disappear undetected. Just like the one we took to get here. Has anyone ever used it? No one that I know of. The servants used it to dispose of waste. Waste? What kind? It leads from the kitchen, so I'm sure you can imagine. Bones, scraps, slops. Oh, wonderful. Tell me more about this mine gallery. It's been abandoned for years, but we could use it. According to the drawings, it's very close to the court cellars. Christian of Pisek confirmed it. That's a very strange coincidence. My father said King Wenceslas had long suspected he had enemies among his own ranks. Maybe he had an escape route built. He just didn't finish it in time. What exactly am I supposed to be looking for down there? मुश्किल है बट हो सकता है. देखते हैं यार, भी बहुत चीजें हैं इनके पास. ये सीक्रेट वर्ड्स पे भी इनका काम चलेगा. What are we searching for? We need to find and mark the point where the crypt wall joins with the tunnel. When we break through the wall, only a thin partition will be between us and the cellars of the Italian court. But how will I know I've found the right place? You can tell if there's a cavity behind the wall by the sound it makes. The gallery is also damp, so the spot might be a different color. So, I'll be knocking on the walls in the dark and looking to see if any is a different shade. Well, yes. Pretty much. Thanks for the advice. Anything else I should know? Be careful. Come back in one piece. I'll do my best. It appears we're supposed to go and mark the path for carrying out the silver. I thought you were going with Brabant. He boasted that he knows those passageways. Brabant backed out of it. Perhaps he was afraid to soil that fancy coat of his. Or he was just lying again. Well, are we ready to go and take a look underground? Absolutely. Where is the entrance anyway? In the kitchen. That's a promising start. वैसे one thing I have never understood is Moon Knight, Spider-Man and Deadpool like use a fully masked work. So why doesn't Marvel just use some stuntman to shoot cameos to make universe more believable? मतलब stuntman किस लिए? मतलब why do you think they need stuntman? ऐसा क्या? Well, so they don't have to call expensive actors.
यार एक्टर तो पैसा लेंगे ही ना, फिर भी उनके जो नॉर्मल रोल है उसके लिए। स्टंटमैन से थोड़ी है आप इमोशंस वाली रोल एक्टिंग करवाओगे। टू शूट 5-6 सेकंड्स कैमियो। अच्छा मतलब ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कैमियो वैमियो के लिए स्टंटमैन क्या करें? यार उन लोगों का होगा ना कि वो खुद करना चाहते हो, कई एक्ट्रेस का मन होता होगा खुद ही करने का। Send me to wade through shit. Stay close to me. The path might branch off somewhere. We would not want you to get lost. You won't scare me. I'm not a child. You are scared shitless, I can tell. This poor soul must have been here a long time. I mean voiceless guest appearance. Well. अच्छा, like Spider-Man swinging by New York in Daredevil show. मैं Daredevil का शो एक्चुअल में नहीं देखा। There is someone here. You know what they do to us? The dead. Nothing. Where did you come from? What are you doing here? Sitting around, twiddling our thumbs. Is it not obvious? They are stealing from your Christian brothers. How did you get here? We hid behind the altar. Then we broke in here at night when the church was closed. We were gonna wait a while before we got to work. Then we heard a loud noise. Someone was a bit too keen and closed the lid of the crypt. So, we're kinda trapped here. So you don't need Tom Holland for that. You can pass through the Ruthar Palace. If you keep going down the corridor through the crypt, you'll come out right in the kitchen. That's not a bad plan. I heard the place is empty. Nearly empty. But if you do not tell anyone about us, we will keep quiet about your relic business. What do you say? Deal. And thanks. मैंने उनको बता दिया बाहर जाने का, लेकिन भाई पीसफुली होना था, मारना नहीं था फालतू में। लड़ाई वड़ाई पे बात आ जाती फिर से। ये देखो सिविलियन किल्स बढ़ गया मेरा। ये मैंने जो बेगर्स को मारा है ना सेल्फ डिफेंस में, उनका काउंट हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ केसरी का ये सिस्टम मुझे थोड़ा खराब लगता है इस वजह से। ये भाई सेल्फ डिफेंस को भी एज अ मर्डर ले लेता है कि सिविलियन किल में। ये नहीं देखता कि वो सेल्फ डिफेंस था मेरा। Hi, that sounds different. We have it. Have you ever been to Gutenberg? Before all this, I mean. A long time ago. With Martin. Is that so? Right. He was here on business and brought me along as help. But I didn't see much. Martin met with a customer in the morning, and we drove back home in the evening. Perhaps we passed on the street and did not even know it. अरे वांटेड बन गया मैं। ये साला इन बेगर्स नहीं बताया होगा, कुत्ते पक्का। Good morning, Henry. Good morning to you too. Have a good day.
Sam and I walked through the cellar as far as we could, and marked the spot where we should dig. Well done. Brabant has found some men in the meantime. He may refuse to go down tunnels, but he does have his uses. Considering how much coin he promised them all, I reckon they'll do everything they can to make sure we get out alive. Oh, and while we're on the subject, take this. You've done a lot. मर्डर की वजह से या तो मेरे पे लगाया वो चार्ज क्रिश्चियन ऑफ पीसेक को मारने का लगाया या तो पता नहीं किस लिए लगाया. Good work. You deserve it. What now then? Have you come up with a way to get to the legate and persuade him to take us to the Italian court? I should say so. Hey, listen up, all of you. You're done for today, but get plenty of sleep. We'll chase you from your beds early in the morning. Oh, is that really necessary? It is. We'll be riding to Loretz. Cardinal Pozzo goes to bed with the chickens and gets up before the crack of dawn. After the morning prayer, he eats breakfast together with his retinue, and no one is allowed to disturb them. Most regular folks are asleep at that time, so everything should be nice and quiet when you pay him a visit. If we don't persuade him to get us into the Italian court, we're fucked. So don't do anything stupid, right? Should we be prepared for a fight? That shouldn't be necessary. Godwin insisted he'll sort things out peacefully with the Cardinal. I reckon we'll have to twist his arm a bit. And while Godwin's persuading His Eminence to put on a show with us at the Italian court, the Devil, Janosch, Kubienka, and Ada will take his retinue away to the Devil's Den. Hagen and Urso will be waiting for us there to keep them under guard. So what exactly am I supposed to do? Like I said, stand beside Godwin looking mean. With a bit of luck, that'll be enough. Exactly. No killing. Is everyone going there? Everyone except Capon, Brabant, Catherine, and Rosa. What? Am I just supposed to sit on my ass with the women? At least you'll get your beauty sleep. That's what you wanted, isn't it? You said Pozzo has a band of soldiers with him. Wouldn't it be better if we all went? And leave this place unguarded? That's too risky. Someone has to keep watch in case any uninvited guests come snooping around. That stands to reason. We cannot leave ces belles dames alone. Oh. All right then. All right. Let's get to work. Report to me tomorrow morning, is that clear? Can we go to Loretz now? I reckon it's too late now, eh? We have to leave before the crack of dawn tomorrow, while it's still dark, understand? They didn't get far. I didn't help them much. बे यार ये जिश्का के आदमी नहीं मारा है.
Stay close to the others. It's not safe here. Keep close to others. It is nice, whatever. But my belly... I was hoping you'd be coming with us in the morning. That's a shame. Don't get me started on that. It can't still be dangerous for me, can it? I mean, it's been some time since our escape from Malashov. And von Bergov is locked up in Sukdom. Well, at least I'll get a good night's sleep. Nah, just you wait. The real trouble will only erupt after we pull off that robbery. True enough. But I'd still rather go with you. The only entertainment I have here is looking at the pretty girls and listening to Brabant's incredible adventures. Both of which can be entertaining, of course, up to a point. I'll trade places with you in a heartbeat. Oh? What's the matter? Are you scared? No. But I don't want to leave Rosa and Catherine alone. With Brabant. Well, well. Is our Henry a little jealous? What are you on about? Nothing. Just saying. Out of my head myself. Hurt like hell. But now, if people didn't stare at my scar all the time, I wouldn't even know about it. Should I take that as a thank you? Definitely. How are you looking forward to parleying with the legate? Have you brushed up on your Italian? It's an uphill struggle, son. I practiced with Brabant, but my memory's not what it used to be. Fortunately, not many speak Italian around here. So at the court, I can bray like a donkey, wave my arms a bit, and no one will be any the wiser. Will the legate be able to understand you at all? No, you'll have to. I'm counting on my Latin, which I studied much longer. But I can't remember the last time I spoke it sober. You're not planning on drinking before you meet him, are you? There's not much chance for it. I can't drink in the morning on an empty stomach. And if I drink in the evening, I'll sleep it off overnight. Where did he learn Italian, anyway? From a Florentine. I met him amongst the mercenaries. All I know about him is his name was Luca, and he had a wife and daughter at home. He probably joined the army to get out of some spot of bother. That's how most of the men ended up there. How did he end up? He fell at the Battle of Kosovo. I was right there. Sorry. Can't be helped. At least his worries are behind him now. Good luck, then. Thanks. The two dead men by the stables. Who knows where they came from? Maybe the last of those fuckers you dealt with, I suppose. Not quite. It was me who sent them here. Why? They'd been stuck in St. James's crypt. So I sent them out through Ruthar Palace in exchange for their silence. Right. Janosch said they were going on about something like that. Forget about promises like that next time.
What about Loretz? I reckon it's too late. We have to leave before... Buono il polline, Enzo. Così così, eh? Il cibo da queste parti fa un po' cagare. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Sit the fuck down. Nos non... Oh, fuck. Nos non quer... Vos nos... Vos non vulnerabo. Nobis... Nobis est petitio. No. Proposal. Ragazzi. Ita. Ragazio. Can you cut it short? Fuck! Don't interrupt! Latin is tough when you're sober. Ah! Fucking hell! Andiamo! Forza! After them! They mustn't get away! Stai attento! अरे यार Figlio di puttana! Figlio di puttana! Spara! Quick! Figlio di puttana! Più veloce! Dati per lava e più veloce! Per un pelo! Vieni, ucciecai! Più veloce! Forza! Più veloce! Vieni, ucciecai! Più veloce! Forza! Più veloce! Io tengo tutte! Figlio di puttana! Aiuto! Fate qualcosa! Fate qualcosa! Hey up, lad. Keeping all right, are you? Well, do your best, don't you? That's all you can do, really, isn't it? Guess in these times, no? Yeah. Not sure about this, though, eh? Who's keeping these roads? No one looks after them, you know. My words exactly. I mean, no one gives a damn until some noble rides along, and then he's surprised. That way! L'uomo di Dio, mi lascia in pace! Io sono l'uomo che ti This whole mission is quite funny. chiesa, capite? Di chi è? Non ho fatto nulla! Misericordiosa Vergine Maria! Cosa fine oggi arriva? Curvato un gambe! Aiuto!
Right, let's see him. Nie chciał zamknąć gęby, to dostał. Nic mu nie jest lekko otumaniony. No przecież lekko dostał z bańki, no leciutko. You've killed him. अरे यार. Przecież nic mu nie zrobiłem. You fucking killed him, you great Polish ox! You are going straight to hell for that. That's right, hell! And all those horned demons there will be taking turns with you. Just wait. They're gonna be fighting over your Polish ass! Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak tępy łeb? यार हेडबट ज्यादा तगड़ा चला गया. Strip them, or their clothes get even more soaked in blood. You can undress His Eminence here. Me? Why? Because you're the legate now. अबे यार. Well, that didn't really work out. What are we going to do now? You heard, didn't you? We'll get rid of the bodies, get Godwin dressed up, and hope his Legate Act fools the Church Council. It's too late to back out now. Well, maybe it'll be better this way. I wasn't sure the legate wouldn't betray us anyway. I trust Godwin a lot more. Sure, I trust him too, but not so much his language skills. Let's get out of here. Agreed. Our business here is concluded. Are you going back to Ruthar Palace? Aye. We have to wash the clothes, get Godwin into them, and hope we don't all end up on the gallows. We still have some time, so if there's something you need to do elsewhere, feel free. I have the feeling there won't be time for anything else once we get started. You know what? I need to take care of something first. We'll meet at Ruthar Palace. Okay. What? Stop! You fucker! Somebody! Shit! I'm going to gut you, you poor son! Take that fucking hand, damn it! No, you don't! अरे भाई भागी क्यों नहीं? Well, the next mission is point of no return if I remember. ना मतलब मैं अब जाके बात करूंगा तो ऑप्शन आएगा ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का. But oh, he's run off again, the little beast.
अगर नेक्स्ट मिशन नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है तो वार्निंग तो आ ही जाएगी। मतलब मैं कह रहा कि वंस यू गो टू डू द मिशन ऑफ स्टीलिंग, हाँ तो वार्निंग तो आ जाएगी ना, ये कह रहा हूँ। वो गेम वार्निंग तो दे देगा ना कि इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, डू एनीथिंग यू वांट बिफोर दिस, लॉक इन कर देगा। हाँ तो बस वही देखना है मुझे। मैं मेरा यही प्लान है कि जब तक वो ऑप्शन नहीं आता तब तक मैं खेल रहा हूँ ये मेन स्टोरी, उसके बाद मैं रोक दूंगा। फिर मैं रूम्स वगैरह करूँगा। साइड मिशन वैसे हो ही चुके सारे मेरे, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन ऑन करना चाहता हूँ। एंड फिर मेन स्टोरी कंटिन्यू भी होगा, फिर ख़त्म ही होने वाला है यार गेम मेरा ज़्यादा लंबा तो चला नहीं उतना, मतलब चल गया, लंबा चल गया, बट हाँ मेरे को जैसा लग रहा था कि बहुत और लंबा चल सकता है उतना तो नहीं। मतलब मेरे हिसाब से सही पेस पे खेला मैंने, काफ़ी खेल लिया मैंने। वहाँ बाहर के फिगर्स लेके चलना था 250 घंटे वंटे लेके, उतना तो नहीं होने वाला था ये गेम। कितना प्ले टाइम हुआ? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 173 था, और इन गेम तो 137 दिखा रहा था। देखो रियल प्ले टाइम गेम में ही दिखाता है, ठीक है। ये देख लो, मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ, 140 आवर्स है। मैं बाहर का प्ले स्टेशन का टाइम इसलिए नहीं बता रहा ना, मतलब उसका 173 है बाहर से, बट वो मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो तो क्या है, लोडिंग स्क्रीन पे रहने पे भी तुम्हारा वो काउंट होता है, वो पॉज का भी काउंट होता है इसमें। ये रियल प्ले टाइम है मेरा, क्या मैंने एक्चुअल में 6 आवर्स दिए हैं गेम में। Easy, good horse. Whoa. KCD 1 से तो ज़्यादा ही खेला है मैंने गेम, इतना तो सबको पता है। ठीक है भाई, वो गेम ने बोल दिया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका हूँ वो ऑफिशियली। Heal. Henry, come here. How's trade? I've got the coin for you here. Thank you very much. Come here, Henry. Did anyone show up with... Yes, and some fella stopped by, saying he needed a... Of? Wonderful. Bring the finished piece straight to him. He'll be waiting. मेरे पास लॉन्ग स्वॉर्ड ऑलरेडी है भाई। This one is sharpened already. डिलीवर कर देता हूँ। एसेट्स मतलब किस पे? My, what a beautiful horse. अच्छा हाँ, इस पे ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ तो अब मेरे को पता चल गया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब मैं आराम से इसे स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कल ही स्टार्ट कर दूँ भाई, ज़रूरी थोड़ी है मैं इधर बस ओपन वर्ल्ड एम्प्टी घूमता ही रहूँगा कुछ दिन के लिए। वैसे मैंने गेम खेल तो लिया यार, सब क्वेस्ट कर ली भाई, कोई मेरे को तो मिसिंग दिखी नहीं, जितनी थी कर ली। और कुछ मिस होना भी है तो ठीक है यार, मैंने गेम को मतलब प्रॉपर वो किया है, एंजॉय किया है। मैं कुछ भी वैसा नहीं किया मैंने, रश मार दिया है, भगा दिया है, प्रॉपर अपना टाइम देकर ही खेला है गेम। अब मेन स्टोरी कंप्लीट होगी, फिर डीएलसी लास्ट की वही दोनों बची, हो गया अपना गेम खत्म।
भाई मेन स्टोरी खत्म होने के बाद मैं टाइटल पे एंड नहीं लिखूंगा, मैं डीएलसी के बाद लिखूंगा। Careful. This place is off limits to you. Surrender now. All right. You caught me. I surrender. So? You can't say you weren't warned. You'll pay up and... Look. What are you? Look, we're both... Where are you? It's like that. No. They're with... Well, at heart, then all of a sudden... That girl made... Aye. All right, then. That's taken care of. Huh? Off you go now. Stand here all day. I don't care. Back again. Go away. Greetings. I finished your... Let's see it. Beautiful one. And here's some... If you ever need anything... It was good to see you, my friend. Stand here all day. I don't care. Here, Matt. Jesus Christ, he prays. हो ही गया है भाई मेरा गेम भाई अच्छा खासा। अभी समझो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद का जितना पार्ट है ना, आई स्टिल बिलीव कि 10 घंटे तो कम से कम लेगा। आई स्टिल वंडर हाउ डज KC2 हैज मोर डायलॉग लेंथ देन बाल्डर्स गेट 3। भाई वैसे तो हाँ, बाल्डर्स गेट 3 ज़्यादा ही बड़ा गेम है और उसमें आपने बताया था बहुत सारी एंडिंग्स हैं, मतलब मल्टीपल एंडिंग्स है यार, मतलब देयर इज़ नो मैच फॉर द नंबर ऑफ एंडिंग वगैरह। भाई मेरे को लगता है इन लोगों ने डायलॉग वाली भाई एनपीसीज वगैरह इतने हैं ना केसीडी में अच्छे खासे, मतलब कोई गेम शायद ही हो जो एनपीसीज पे इतना ध्यान देता हो। मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा ऐसा कोई गेम। Excuse me? Fountain? Where does the water come from? Here, in the middle of the city. There's something here. The best wine comes from Czech soil. Have your senses yet? Oh, fuck you. I'm telling you, Careful. Conrad's going to win the tournament. Nonsense. He does. Guten Tag, mein Freund. I'd like to do something... हेलो साज भाई, वेलकम। बाल्डर्स गेट 3 मैंने इससे पहले प्लेट करके छोड़ा भाई। दैट इज गेम इज बेस्ट गेम एवर मेड फॉर एटलीस्ट फॉर मी। और ये गेम डूड व्हाट द फक, ये शादी का जो गेम पीक गई है KC2 भाई। कहाँ तक पहुंचे अभी वैसे शादी के बाद? How's this? You really? बाल्डर्स गेट तो असली गेम ऑफ द ईयर थी भाई। Ja, das ist gut. Finally a good बाल्डर्स गेट 3 यार, लेकिन बहुत बड़ी गेम है यार, इससे भी ज्यादा बड़ी गेम है।
मतलब उसको खेलने के लिए ना मेरे को और ज्यादा पेशेंस चाहिए। केसीडी पता है मैं केसीडी क्यों खेल पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी विचर और आरडीआर टाइप के गेम्स खेल चुका हूँ जो ओपन वर्ल्ड है, जिनमें अच्छी साइड क्वेस्ट होती है। वैसे टाइप का फॉर्मूला मेरे को वो लगता है फन टू फॉलो। बाल्डर्स गेट बहुत ही डिफरेंट टाइप की गेम है यार, वो तो समझ ही नहीं आती मुझे देख के कैसी है भाई। आफ्टर मैरिज एक कैसल का सारा क्वेस्ट करके रात में पार्टी करने के बाद सुबह सब एम्बूश होते, वहाँ क्या फाइट थी भाई। उसके आज कासल डिफेंड करना था गॉडविन के साथ। अचानक से सब स्टोरी में हो रहा है, इतनी सारी बैटल्स चल रहा है, मजा ही आ रहा। अरे अभी खेलते अभी और आएगा। मेरा तो पता है क्या हुआ मेन स्टोरी में, मैं तो वहां पर आ गया हूँ, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया हूँ। मतलब कि मैं अब यहाँ पे अगर मैंने मिशन स्टार्ट करा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा कोई साइड क्वेस्ट, या और पुरानी साइड क्वेस्ट जितनी भी क्या बोलते हैं मैंने एक्टिव रखी है सब कैंसिल हो जाएंगी। बट गेस व्हाट, मैंने पूरा सब क्लियर कर दिया भाई, मैंने पूरा मैप क्लियर मार दिया गेम का। ये जो क्वेस्ट देख रहे हो ये साइड वाली, ये एक डीएलसी है, तो ये मैं मेन स्टोरी के बाद भी कर सकता हूँ। तो इसे मैं मेन स्टोरी के बाद ही करूँगा ये वाला। मेरा होने ही वाला है गेम। मैं सोच रहा था कि बस थोड़ा एक्सप्लोर मारता हूँ अब कंप्लीट क्योंकि अब मान के चलो अगली 3 स्ट्रीम के अंदर मेरा मेन गेम हो ही जाएगा आराम से। भाई वो वाला मोमेंट कैसा लगा जब सर हैंड्स को क्या बोलते हैं तुम्हें, वो एग्जीक्यूशन से बचाना था। मेरे को वही तो वहां पे फट रही थी एक्चुअल में। मतलब बहुत बहुत वो इंटेंस था भाई, बेल बजी जा रही थी, बेल बजी जा रही। मेरा चेस्ट में सामान लग जाएगा, पैसा भी बिक जाएगा। मास्टर मैनहार्ट के पास जाके बोलूंगा मेरे को टूर्नामेंट में पार्ट लेना है। Good day. तो मैंने मुझे इसमें पेशेंस की ज़्यादा दिक्कत आई केसरी 2, और मुझे बाल्डर्स गेट 3 बहुत जल्दी आदत पड़ गई थी, और वो गेम काफ़ी फास्ट है कंपेयर। अच्छा ना बाल्डर्स गेट 3 की लेंथ ज़्यादा है बट उसकी पेसिंग फास्ट है। हाँ वैसे बात सही भी है भाई, केसीडी की पेसिंग स्लो है। और तुम ऐसे बाय नंबर ऑफ मिशन देखोगे ना, पता है इसमें कितने स्टोरी मिशन है, सिर्फ 32 ही हैं। लेकिन भाई जब तुम साइड क्वेस्ट के साथ कंबाइन करते हो गेम को तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि इसका नेचर ही बहुत स्लो बन है भाई। तुम बीच में खाना भी खा रहे, तो सो भी रहे हो, तुम अपना आइटम क्या बोलते हो उसको फोर्ज भी कर रहे हो, तुम्हें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम पे। तो नेचर बहुत स्लो है इस गेम का। हाँ भाई फटी तो मेरी थी, मेरी भी भाई। मतलब बहुत इंटेंस सिचुएशन थी। वैसे मेरे को लग रहा था कि सर हैंस मरेंगे तो नहीं, क्योंकि भाई वो स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और मेन ये भी है कि वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल पर्सन पर। बट फिर भी भाई ये चैलेंजर भाई ने मेरी चैट में लिखा था कि इफ़ यू डोंट डू इट इन टाइम सर हैंस विल डाई। बट ऐसा है ना, अगर सर हैंस मर भी जाते तो वो गेम ओवर हो जाती स्क्रीन, मतलब रिप्ले करना पड़ता वो पार्ट। मतलब वो वैसा नहीं है कि परमानेंट हो जाता स्टोरी चेंज वहां से कि भाई मर ही गया। अरे तुमने वो क्या बोलते हैं, वो वाली क्वेस्ट करी क्या तुमने? आई थिंक कर ली होगी वो वाली, जिसमें वन बर्गॉफ को बताना होता है सेमीन के बारे में। वो वाली करी क्या? मतलब उस वाली में क्या क्या किया ये मैं पूछ रहा। तो कर तो ली होगी।
मास्टरमैन आर्ट इधर है। हाँ Purses, belts, slippers. God bless. Greetings. Careful. Refrain from sin. Satan is going round our city and the only defense is piety. समीन के तो सबको पेल दिया। तो तुमने फिर वो किया क्या, वो समीन को जब क्या बोलते तुमने टर्न इन किया तो वहां पे फिर क्या किया तुमने? वो हाशिक का साथ दिया कि साइड चेंज करके समीन का साथ दिया? ये पूछ रहा। मैंने बताया क्या किया, मैं तो पहले मतलब वहां पे गया, हाशिक का ही साथ दिया था मैंने, लेकिन भाई मेरे को दिख रहा था वो गलत कर रहा है जो भी कर रहा है वो भाई। उसने वो सबको मारने लग गया और वहां पे जो वो सिविलियंस खड़े थे उन पे भी भाई उनको भी मारने लग गया। मैंने भी भाई तुरंत तलवार निकाली और हाशिक और उसके आदमियों को मार दिया। और फिर वो समीन और ओल्डा वो दोनों जिंदा बच के वहां से निकल गए और वो हम लोगों ने वहां पे समीन वाली जगह पे आग लगा दी। On useless pursuits and come to learn the art of sword. Hail. Good doggy. Good boy. वो कहाँ है भाई, वो मैनहार्ट है या भाई? Come. I And let the apologize. Gutenberg sword fighting. All right. See you later. The foulest den of life. I'm sorry. भाई टिकट बुक कर ली स्पाइडरमैन फर्स्ट डे की। ये टीवी स्पॉट्स ही इतने दे रहे हैं कि पूरी पिक्चर ये इसमें निकाल। भाई मैं तो देख ही नहीं रहा भाई, मेरे को पता ही नहीं क्या क्या आ रहा है टीवी स्पॉट। मैं तो कुछ नहीं देख रहा, ना ट्रेलर ना वो लास्ट ट्रेलर भी मैंने नहीं देखा। भाई ये लोग बहुत वो है यार, सोनी वाले बेकार है ये लोगों ने नो वे होम के टाइम गंदा स्पॉइल किया था पूरा। मैं इन लोगों का देखता ही नहीं भाई। मैं तो कहूँगा कुछ मत देखो, टिकट बुक है, बस वेट करो डे आने का और अपने आप भाई देखने जाओ। नो वे होम तो आधे से ज्यादा इन्होंने स्पॉइल कर दी थी भाई, ट्रेलर वेलर दिखा के। सोनी वाले बहुत बेकार है भाई कसम से। उधर ही मार दिया था, आई वाज विद द पर्सन जो सबको मार रहा था। ओके मतलब हाशिक के साथ फिर कुछ करने का तुम्हारा प्लान बना कि मतलब उसको भी मार दूं साइड में कि उसने सबको मार दिया है? वैसे पूछ रहा कि मैं तो उसकी जब देखा ना हरकत भाई, उसने सबको ऐसे मारने लग गया है, मैंने उसको पीट दिया भाई। मैंने उसको और उसके आदमी को भी मार दिया। भाई वो मतलब बहुत ही डेंजरस था भाई वो सीन मेरे लिए। मतलब मैं तो बस अरेस्ट करने आया तो उसने मैसेकर कर दिया पूरी जगह। Gepriesen sei der Herr. What do you need? Sign me. Toll. I'll show off. Na schön. That's enough. Pay the entry. Here are the gross. I look for May Lady fought on the day of the tournament. Go, or you can wait. I want to wait for the... Of course. Here you are. Something you won't believe. I've traveled the whole world. Tournament. Now I will tell you the amazing things I've seen and experienced. In the south, I saw नहीं वैसा कोई प्लान नहीं बना भाई।
मैं तो भाई देख कर वो हो गया था एकदम भाई कि ये तो साला सबको मारे जा रहा है, तो पगला गया है वो। मैंने भाई जब देखा है सबको मारे जा रहा है बिना मतलब के, हमारा मेन काम था कि हम अरेस्ट करें भाई वहाँ पे। वो भाई वो मैसेकर कर दिया उसने हर जगह। तो मैंने भाई फिर भाई तलवार निकाली और मैंने भाई उसको और सारे सोल्जर्स को मार दिया मैंने और केपॉन ने। और फिर हम लोग गए वन बर्गॉफ के पास। मैंने पहले सच बता दिया कहीं भाई कि मैंने मर्डर किया है। फिर भाई कट सीन आया एक जिसमें हेनरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है लटका के। फिर वापस जब रीलोड फाइल पे गया तो वहाँ से मैंने डिसीजन मैंने क्या बोलते हैं उसको झूठ बोला सब कि भाई हम मैंने मतलब ये बताया कि ये सबको मैसेकर कर रहा था, लेकिन इसको सेमीन के आदमियों ने मार दिया और ये नहीं कहा। और फिर हम निकल गए वो लोग यहाँ से, मैंने ये बोल दिया। मेरे को भाई वो बड़ा बड़ा ही बेकार लगा यार, उसने एकदम सबको मैसेकर वैसेकर कर दिया था। वैसे वो वनबर्गॉफ भाई वो अपनी साइड है भी नहीं, वो एक्चुअल में सिगसमंड की साइड है, उसको हम अपनी साइड लेने गए थे। वो तो भाई एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ होना। कि गेम में पॉलिटिकली भी सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत भाई। Esteemed citizens of Gutenberg. Gutenberg is a great city, famous for its wealth and the diligence of its people. But its citizens excel in more than just mining, trade, and crafts. They also excel in their bravery. That's why they didn't hesitate to take up their arms and show off their skill in a friendly competition. Glory to them, and glory to Gutenberg. Yay! I hope you put on your gear so you can crush them. Men who could easily make war their trade will now be competing for Lady Fortune's favor. Matthew the Minter, he entered the tournament to win over the heart of a fair maiden whose name he was too shy to reveal. But we all wish him luck and hope Dorothy will reward his bravery. Now his skills will be put to the test by a tough bruiser who's well known across the town. Lucas, nicknamed the Half-Friar. He... We'll see a duel between two skilled and seasoned fighters. A fighter of such experience, he can hardly be matched. Well known to all of us, thanks to his many previous victories. Henry of Scarlets! And which worthy opponent has Lady Fortune chosen for him? Matthew the Minter! Who'll taste the glory and who'll feel the sting of defeat? That will soon be decided. For the glory of Gutenberg, let the duel begin! End of duel! Went to this skillful swordsman who displayed truly beautiful technique. Henry of Scarlets! He clearly has the advantage,
But will he be able to use it? We shall see. Contenders, get to it! End of duel! A second hard-earned win for this famous and truly mighty contender. Henry of Skalitz! Put on your tournament gear. We're waiting for you. Careful. You can't enter the arena like that. Equip yourself according to the tournament rules. Henry, you need If it isn't the famous Gutenberg swordsman. I can't let you participate. Why aren't you ready yet? Put on your tournament gear. We're waiting for you. You can't enter the arena like that. अरे यार ऑप्शन तो आए. Tournament rules. अब तो ये बोलो ना हटाना है. No time to lose. Glory to Henry. Henry will kick everyone's ass. End of duel. Went to this skillful swordsman who displayed truly beautiful technique. Henry! He clearly has the advantage, but will he be able to use it? We shall see. For the glory of Gutenberg, let the duel begin! Jesus Christ! End of duel! True master swordsman. What a duel that was. It's over! All hail the victor of the longsword discipline, who... People of Gutenberg! The glory of Gutenberg has grown great. I'm here. Great. Hi. Early and fairly, and deserve your thanks. Look.
onward to the next tournament, and I wish that many of you, good townspeople, will find the courage to stand in the arena as well. And for those of you who'd like to learn the art, the Swordsman's Guild will happily assit. Oh, you not. हो गया यार मेरा आज का। फाइनली यार हम लोग बहुत क्लोज भी आ गए एक तरह से एंडिंग के। How's I've got the... Thank you very much. That a woman stop. All Wonderful. When you're done. like to do. What would you? Very. You're doing business. Take care. ये डिलीवर करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये आइटम दे के मेरा आज का हो गया भाई। जैसे टू भी क्लोज टू एंड ही है अब। जून के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट करा था और अब एंड के ही क्लोज है। This is going to take a while yet. It's almost finished. Sharp as a razor. I'm finished. Great. You having trouble with your head, lad? Great work.
चलो भाई, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। अगर किसी को कुछ लिखना हो तो लिख देना, मैं जरा 1 मिनट वेट कर लूँगा, 1 मिनट बाद मैं फिर कट ऑफ कर रहा। नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं थोड़ा वैसे ही बचा हुआ एरिया इधर उधर एक्सप्लोर मारूंगा। मुझे सारी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट स्ट्रीम में ही मैं अपना ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी चालू कर दूंगा, और नेक्स्ट में अगर चालू हुआ तो नेक्स्ट के नेक्स्ट और या उसके नेक्स्ट में मेरा कंप्लीट भी है ये गेम। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद फिर तो नॉन स्टॉप मिशन पे मिशन ही चलेंगे, लंबे ही होंगे, लंबे होंगे बट वो ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाले, सब लंबे लंबे चलेंगे अच्छे स्पीड में। और भाई फिर उसका DLC बची है अपनी, वो भी भाई KC2 अपना कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी हो गया मैं कहूँगा बहुत। मैं डेली डेली खेलता था तो होना ही था, लेकिन भाई टाइम लिया अपना मैंने पूरा, नो रश, नो जो जल्दबाजी। आई गेस कोई नहीं है चैट में, ठीक है यार, मैं निकलता ही हूँ यार, ये तो एक 27 पे निकलूंगा। वन 27 होते ही जाऊंगा। चलो यार, गुड नाइट।